Alright. Are we live now? Yes, I think we are live now. एंड मैं वही अभी अपना सेटअप ही कर रहा था। इट्स अ लेजी संडे, तो मैं वो भी बस अपना सेटअप ही कर रहा था थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा 1-2 मिनट शायद मैं लेट हो गया हूँ, सॉरी गाइस, बट आ जाओ ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको पता ही है क्या होने वाला है ये स्ट्रीम पे। ठीक है, फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो। ठीक है, मस्ट से इट्स गोइंग टू बी अ बुक रीडिंग स्ट्रीम विद सम कैफे, विद सम कॉफी या चाय, वॉट एवर यू गाइस प्रेफर। ठीक है, संडे है मस्त सा। ठीक है, तो आ जाओ आप, सबके सब आ जाओ। एंड जो भी लोग आ गए हैं ऑलरेडी, आप कमेंट्स पे आ जाइए। ठीक है, और उधर से हम ले लेंगे कमेंट्स। ठीक है, मैक्सिन मैक्सिम मेफील बोल रहे हैं हेलो गुरुजी। हेलो मैक्सिन यार, मैक्सिन ब्यूटी। लकी रेड्स, लेट्स गो ओल्ड स्कूल पीरियड्स, लेट्स गो फहीम खान, दिस इज इंटरेस्टिंग। सूरज शुक्ला, ज़रूर ज़रूर थोड़ा सा हिंदी अनुवाद भी ट्राई करेंगे कि जितना हम कर पाएंगे हम करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से ना हम अगर चलेंगे तो थोड़ा पेस स्लो हो सकता है बुक रीडिंग का, बट आई थिंक आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, तो मैं आराम से धीरे धीरे ही आप सबके लिए जाऊंगा। ठीक है, तो ओल्ड जनरेशन स्पेशल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गाइस। एंड और एक चीज़ जो है, मैंने ये एक, आज बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो बस एक चीज़ के साथ में शुरुआत करना चाहूँगा। जो एक कमेंट मैंने देखा था, ठीक है, मेरे खुद के इस पे क्या बोलते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो इट्स नॉट लाइक कि वो कमेंट मुझको बुरा लगा या ऐसा कुछ लगा या हेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, बट जैसे जो है हमारे जो बहुत स्पेशल हैं दोस्त जो हैं ध्रुवस्टर, उन्होंने बोला कि आई मीन इफ यू स्टॉप ट्रीटिंग यूट्यूब एज ए साइड किक एंड बी एक्चुअली पंक्चुअल फॉर वंस, देन ओनली यू शुड डिमांड अ बेटर ऑडियंस। बीइंग सो कैजुअल एंड देन मेकिंग दैट डिमांड डजंट सिट राइट। ठीक है, तो यार रात को ना सीन ही हुआ था कि मेरा ना 6 डेज अ वीक थोड़ा वर्किंग चलता है। ठीक है, मेरा सैटरडे तक मेरा वर्किंग चलता है, सैटरडे को भी ऑफिस का काम रहता है। तो मैं घर आते आते मुझको हो गए थे कल कुछ 11, 11 साढ़े 11, हाँ 11 साढ़े 11 हो गए थे घर आते आते। उसके बाद मैंने थोड़ा, मुझे लगा कि यार आज तो स्ट्रीम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों से मैंने पहले ही ऑप्शंस डाल दिए थे कि क्या स्ट्रीम करना है। ठीक है, मुझे पता था कि आज करेंगे ही स्ट्रीम। तो जब मैं देखता हूँ कि वॉच अलोंग के लिए लोग, इतने सारे लोगों ने यस बोला था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है, इवन इफ आई एम टायर्ड आई शुड स्टिल डू द वॉच अलोंग फॉर द पीपल हु हैव वोटेड एंड द पीपल हु वांट टू डू द वॉच अलोंग। ठीक है, पर डिसअपॉइंटमेंट उधर आता है कि एज अ क्रिएटर भी बात करो, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा उधर आता है जब एज अ क्रिएटर आप बैठते हो, आप सोचते हो आफ्टर सच अ ह्यूज हेक्टिक डे, आप सोचते हो कि चलो हम बैठेंगे या मैच देखेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, पर वो एफर्ट को कोई जब रेसिप्रोकेट नहीं करता, इसलिए मैंने शायद कल बहुत जल्दी मैंने वॉच लॉन्ग एंड भी कर दिया, क्योंकि आई अंडरस्टैंड देयर वर 9 पीपल हु स्टिल वाचिंग इट विद मी, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने वॉच लॉन्ग एंड कर दिया, क्योंकि मुझे लगा यार ये सही बात नहीं हो रही। ठीक है, एंड जब ऐसे कमेंट्स भी आते हैं थोड़ा सही नहीं लगता गाइस। बट येस, यू हैव गॉट योर ओन ओपिनियंस, एंड 4 लोगों ने वो कमेंट को भी लाइक किया है, सो यू हैव गॉट योर ओन ओपिनियंस। आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन कि भाई मैं शायद इतना रेगुलर नहीं हो पा रहा अपने कंटेंट के साथ, पर जब भी ट्राई कर रहा हूँ आने को, आई ट्राई टू ब्रिंग यू गुड क्वालिटी कंटेंट एनी 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 टाइम। सो वो चीज़ है, एंड आई ट्राई टू कीप डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. So that is what I wanted to say, and thank you for the 34 people who have joined in. I'll just start off by taking the other comments as well. UV Empire, hello. Guruji, Ricardo Kaka, hello. Wrestle Universe, hello. अबाश श्रेष्ठा, चलो शुरू करते हैं। हाय गुरुजी। CR7 करो या मोस्ट पारिंग, CR7 करेंगे करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं, पहले ये एक बुक खत्म करते हैं, एक एक बुक के बाद खत्म करते जाएंगे। ठीक है, इग्नोर करो लकी रेड्स, इग्नोर हैरी द गोट, इग्नोर चिल मारे आप मस्त, सात्विक चिल मारे आप मस्त, कूल एकदम, रियल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। द सेम थिंग एज पीपल से मेक कंटेंट एंड दे आर द वंस हु डू नॉट वॉच, एब्सोल्युटली। वो तो है, कुछ तो लोगों को। लेट्स गो सब, हाय गुरुजी, हेलो, लाइक द स्ट्रीम गाइस, ओल्ड स्कूल प्यूरिस्ट बोलते हुए, लाइक द स्ट्रीम गाइस, ऑल लव गुरुजी, विशेष शाह, हाय गुरुजी। लेट्स स्टार्ट इट नाउ, let's start the stream. And
Aniket Jadhav, good afternoon, buddy. Good afternoon. Let's start the stream. For all the people who are confused which book is going to be read on the stream, that is this book right here. इसकी मैंने बुक की लिंक मैंने Amazon की इधर डाल रखी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में. क्या पी रहे हो पात? यार मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है, मस्त सा. सो कॉफ़ी पी रहा हूँ एंड ये बुक शुरू करने के पहले इसके बारे में पीछे जो हैं उधर डिएगो मैराडोना की एक ये बात बोली गई है जो इसमें बोली गई है. आई हैव सीन द प्लेयर हु विल इनहेरिट माय प्लेस इन अर्जेंटीन फुटबॉल एंड हिज नेम इज मेसी. राइट, सो ये पीछे लिखा गया है. और भी मैं पढ़ लेता हूँ पीछे जो लिखा गया है. और एक बंदे ने नीचे डाला है अबाउट लियोनेल मेसी, हु हैज स्पोकन अबाउट लियोनेल मेसी, दैट इज पेप गार्डियोला. उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, आई कैन टेल माई ग्रैंड किड्स वन डे दैट आई कोच्ड लियोनेल मेसी. अपार्ट फ्रॉम दैट, द summary of the book is, despite all the fame and adulation, remarkably little is known about Lionel Messi, the modest and intensely private footballing genius. Just how did the boy from Rosario, Argentina, become the world's greatest player? Guillem Balague has had unprecedented access to Messi's inner circle, his coaches, teammates, and family. In addition, Pep Guardiola has provided exclusive analysis of the player. The result is an authoritative and compelling account of the wonderful mystery that is Messi. ठीक है, तो बेसिकली ये बुक में पेप गार्डियोला की एक छोटी एनालिसिस भी है अबाउट लियोनेल मेसी एंड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड जो लियोनेल मेसी का जो बचपन रहा है उधर से पूरा बहुत डिटेल्ड अकाउंट दिया है गुइलम बलाग ने इस पर्टिकुलर बुक पे. गुइलम बलाग के बारे में अगर आप जानते नहीं है तो प्लीज जाइए ट्विटर पे जाइए. ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड स्पेनिश जर्नलिस्ट, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड बार्सिलोना जर्नलिस्ट. तो वो भी आप प्लीज देखिएगा. विच ईयर दिस बुक हैज कम, रुक जाओ, तो वो मैं भी आपको बोल देता हूँ कि कौन से ईयर में. तो फर्स्ट पब्लिश्ड तो वो 2013 में हुई थी गीतार, ठीक है. फिर ये वाला जो एडिशन है पेपर बैक एडिशन वो 2014 में पब्लिश हुआ, ठीक है. तो शुरू करते हैं बॉयज, लेट्स स्टार्ट द बुक. एग्जैक्टली, लेट्स स्टार्ट द बुक. फॉरवर्ड से शुरू करें कि हाँ फॉरवर्ड से शुरू करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 से शुरू करते हैं? बताओ, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि फॉरवर्ड से शुरू करें? नहीं, हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है. हाँ, a new edition will be released by him as well. हाँ, yes, old school peers, that I know. ठीक है. So chapter 1 से शुरू करते हैं and everyone is talking about chapter 1. So let's start from chapter 1. ठीक है. So chapter 1, introduction. Where is Leo? All right. इसका जो टाइटल है चैप्टर का, Where's Leo? That was the question on everyone's lips in Leo's classroom at the Juan Mantovani Middle School. His school was situated in the district of Las Heras, in the south of the Argentinian city of Rosario, close to his home. Leo had missed a week of school, and apart from brief illness, he rarely did that. His desk stood empty, and at playtime, when someone got a ball out, the game seemed even more confusing. There is no football pitch at the Juan Mantovani, and there are always too many kids for the small, cramped playground. It did not encourage spacious, expansive games, and with Leo absent, even less so. It had been some days since he had been seen. Starts off हम लियो मेसी के स्कूल में हम स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं कि लियो मेसी युआन मांटोवानी मिडिल स्कूल, JUAN, युआन MANTOVANI मैंटोवानी मिडिल स्कूल में वो पढ़ते थे. एंड ये स्कूल होता था अर्जेंटीना जो रोजारियो सिटी जो है उसके साउथ में होती थी ये स्कूल, ठीक है. स्कूलिंग उनकी साउथ में हुई है. अभी हमको समझ में आता है कि एक वीक जो स्कूल का है, लियो मेसी ने एक वीक मिस किया फुल ऑन, ठीक है. पर वो कभी करते नहीं थे, पर वो कभी ये जोन में कभी थे ही नहीं. तो एवरीवन इज एक्चुअली अ बिट सरप्राइज्ड दैट वो तो कि वो स्कूल मिस कर रहे हैं. तो इसीलिए ये चीज को मद्देनजर रखते हुए ये बुक की शुरुआत हुई है, ठीक है.
So moving on, it was September, 3 months before the end of the academic year, which in Argentina begins in December. Exams were set around that time, and Leo couldn't be present. Someone asked on his behalf if he could do his exams on another day or if he could be given work while he was away. No, sorry. Has Leo come in today? His teammates at Rosario Club, Neville's Old Boys, where he played in the lower ranks, were asking the same question. He had missed a number of training sessions at the Malvinas Training Academy, and he wasn't around for the match at the weekend either. Hepatitis, said someone at the club. He's got hepatitis. Ah, that will be it. Nobody really knew what it was, but it sounded terrible. Something that if he caught it meant that he certainly couldn't play football. Yes, the maestro has hepatitis. That will be it. So, बहुत अर्ली ऑन ये जो लास्ट में स्टेटमेंट था ना, यस द माइस्ट्रो हैज हेपेटाइटिस, दैट विल बी इट. सो लोगों को मतलब पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन वॉट एवर लियो मेसी, मतलब in whatever Leo Messi was related to. I mean, if he isn't coming down to practice, if he isn't coming down to school, if he isn't coming down because he was a favorite at that particular point of time. वो एक favorite थे, ठीक है, वो एक फेवरेट थे रोजारियो के, वो एक फेवरेट थे अपने स्कूल के, वो एक फेवरेट थे फॉर द टीम्स दैट ही प्लेड. नेवल ओल्ड बॉयज के बारे में बात की मैंने, तो बहुत यंग टाइम से वो नेवल ओल्ड बॉयज के साथ खेल रहे थे, तो ही वाज अ फेवरेट फॉर द पर्टिकुलर स्कूल और फॉर द पर्टिकुलर टीम दैट ही प्लेड. तो जो भी रीजन एसोसिएट होती थी उनकी एब्सेंस के साथ, वो बहुत रेडिली ली जाती थी, वो बहुत रेडिली एक्सेप्ट कर ली जाती थी सोसाइटी से. सो वो चीज होती थी लियो के साथ, अब तक हमने वो अंडरस्टैंड किया है. The maestro. Messi had at other times also been El Picky at school. El Picky, ELPIQUI. ठीक है, but was the maestro to his adolescent peers. ठीक है, उसको एल पिकी बोला जाता था, पर उसके जो और सब जो उसके साथ जो पढ़ते थे वो उसको माइस्ट्रो भी बुलाते थे. ठीक है, सात्विक वही मीडिया वाला काम, हेपेटाइटिस हो गया एंड ऑल. Thank you guys for tuning in. ठीक है जी, 42 people watching, crazy भाई. आज कितने चैप्टर्स आप कवर करोगे? देख यार, आई ट्राई कि एक दो तो हो जाए, क्योंकि मैं बीच बीच में हिंदी भी बोल रहा हूँ. एक दो तो हो जाए, वो तो मैं ट्राई करूंगा कवर करने को, ठीक है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, ठीक है, एज यू कैन सी. सो आई ट्राई टू कवर 1 or 2 चैप्टर्स, ठीक है. Okay, Messi had at other times also been El Picky at school, but was the maestro to his adolescent peers, as others among them were Clark Kent, the Galician, the Greyhound, the Korean, because of his haircut. तो ये सब भी बुलाते थे. क्लार्क केंट बुलाते थे उसको, गलीशियन भी बुलाते थे, ग्रे हाउंड भी बुलाते थे, और कोरियन भी बुलाते थे उसको बिकॉज उसकी हेयर कट की वजह से. ठीक है, तो ये चीज. ध्रुवन पांड्या, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन भाई, थैंक यू. नो वन हैड क्रिश्चियन नेम्स एंड सरनेम्स इन अर्जेंटीनियन फुटबॉल. इंटरेस्टिंग. ठीक है, किसी का भी क्रिश्चियन नाम और सरनेम नहीं होता था अर्जेंटीनियन फुटबॉल में. एंड दैट्स हाउ द ऑफिशियल स्क्वाड लिस्ट वाज रिटन. नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट एंड निकनेम. द माउस, द बिटरमैन, द शॉर्ट वन. ठीक है, तो ये सब भी बोला बोला जाता था. ठीक है. वेयर हैज लियो गॉन? Adrian Correa looked after this diverse group. Leo's first 11-a-side trainer. Adrian Correa, Leo's first 11-a-side trainer. But he too knew nothing of the boys' whereabouts. Strange to disappear in September. And more than strange, a problem. Winning without Leo would be much harder. Someone telephoned Kike Dominguez, his previous coach at Neville. No idea, I don't know where he is. Kike Dominguez, his अभी जो करंटली अभी हम कवर कर रहे हैं, मेसी बहुत छोटे हैं, बट इसके पहले जो उसके उनके पहले के कोच थे नेवल में, किके डोमिंगेज थे. ठीक है, किके डोमिंगेज का स्पेलिंग है किके में QUIQUE, डोमिंगेज DOMINGUEZ. ठीक है, तो उन्होंने बोला, उनको जब पूछा गया कि भाई मेसी कहाँ पे है, उन्होंने बोला नो आइडिया, आई डोंट नो वेयर ही इज, बट ही अज्यूम्ड दैट समथिंग वाज हैपनिंग. He was always a reliable boy, but when he had gone for a trial at River Plate just over a year earlier, he hadn't said anything then either. Had River finally taken him on? Someone said he had hepatitis. So writer भी बहुत अच्छे से मतलब ट्राई कर रहे हैं, मतलब गुइलम बलाग जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भाई वो जाएंगे, क्या बोलते हैं, रिवर प्लेट जाएंगे.
ठीक है, रिवर प्लेट जाएंगे, रिवर प्लेट एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, राइवलरी थोड़ी सीन है, सो he returned back to that whole hepatitis वाला डिबेट कि someone said he had hepatitis, वो रिवर प्लेट तो नहीं जाएंगे, ठीक है. Uh, okay, next one. The Messi family got a phone call some days before. Come now, bring the boy. They'd waited so long for this day, and now suddenly everything was happening in a rush. They had to prepare to go to Europe. Neville's were not told. Not a single coach, technical director, or player in the club knew what was going on. Neither Leo nor his dad Jorge, always looking out for the kid's career, wanted to tell anybody. It was not difficult to keep their own counsel. They were both discreet, equally reserved, cast in the same mold. With a sense of premonition, the Rosario newspaper La Capital devoted an entire page to the youngster. The first one, it was 3rd September 2000. A very special little leper read the headline. Leper, a sobriquet shared by all his teammates at the club that had once, in the 1920s, played a charity match to raise money for a leper clinic. राइट, सो इसका मतलब ये हुआ, ये लास्ट सेंटेंस का मैं मतलब थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है. लेपर एक क्या बोलते हैं, एक सॉब्रिके को अगर हम थोड़ा आसानी से समझाए, मैं भी आपको थोड़ा सा वो आसानी वाला वर्ड ही ट्राई कर रहा हूँ समझाने को, इसलिए गूगल कर लेता हूँ सॉब्रिके, एंड अकॉर्डिंगली आपको समझा पाऊंगा कि ये लेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो सॉब्रिके का मतलब ये होता है कि बेसिकली लेपर इज अ फ्रेज, ठीक है. लेपर इज अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, ठीक है. तो लेपर 1920s में लेपर उसको बोला जाता था जो उन्होंने एक टाइम पे उन्होंने लेपर करके एक प्लेयर थे जिन्होंने 1920s में रेस किया था एक चैरिटी क्लिनिक के लिए पैसा, ठीक है. तो वो बहुत वाइड स्प्रेड नाम हो गया, वो बहुत वाइड स्प्रेड निकनेम हो गया. तो मेसी को भी लेपर वाला निकनेम भी दे दिया था फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बाय न्यूज़पेपर ने एक वेरी स्पेशल लिटिल लेपर करके हेडलाइन बना दी थी मेसी पे, आफ्टर पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट मे बी ही इज गोइंग टू लीव नेवल्स, ठीक है. And on one side, a smiling Leo, head tilted, wearing an NOB shirt. He'll always be a leper, a passionate supporter of Neville's, the club that was everything to him in his youth, where he had just won the title in his team's age group, a source of pride to him. And with his quiet voice, it was difficult to get the boy to smile for the camera. He shared with the journalist interviewing him some of his dreams. He wanted to be a PE teacher and to play in the first division naturally and get into the Argentine national youth team. It was a long way away, but yes, of course, to get to the national side, a dream. He liked chicken. His favorite book? The Bible. The first thing that came into his head. He isn't one for reading books. If he hadn't been a footballer, what other sport would he have chosen? Do I have to answer that? I don't know. Handball, maybe. But yes, he saw himself as a PE teacher. It was the only class at school that he enjoyed. He could be a PE teacher. Imagine Messi as a PE teacher यार. मेसी अगर आपके कोई भी स्कूल के पीटी टीचर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक दिन मेसी आ गया आपके स्कूल में कि भाई मुझे मैं आज से आपका नया पीटी टीचर, क्या सीन रहेगा बताओ. आप तो पूरा धागा खोल दोगे, दिमाग में पूरा ऐसा पूरा फुल माइंड ब्लास्टिंग सीन हो जाएगा ना आपका. मेरा तो हो जाएगा भाई, क्रेजी, मजेदार, ठीक है. Alright, moving on. It was a newspaper supplement devoted to the Rojinegros, the red and blacks, the color of the NOB shirt. Rojinegros, नेवल्स के नेवल्स के जो आप ये सब क्या बोलते हैं, प्लेयर्स को बोलते हो या फैंस को बोलते हो, वो रोहिनेग्रोस बोलते हैं उनका, ROJINEGROS, ठीक है. रेड एंड ब्लैक्स बिकॉज दे आर रेड एंड ब्लैक्स, ठीक है, जो है कलर नेवल्स ओल्ड बॉयज के शर्ट का, ठीक है. पांच सर थी, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज पी सर. पी इज फिजिकल एजुकेशन भाई, ठीक है. मैं बोलूंगा ड्रिबलिंग करना सिखा दो भगवान. क्रेजी. चलो. So it was a newspaper supplement devoted to the Roy Negros, the red and black's the color of the NOB shirt. The text began, Lionel Messi is a player from the 10th division and is the enganche, player in the whole, playmaker of the team. Enganche, for a lot of people who don't know,
बहुत एक ट्रेडिशनल टर्म है प्ले मेकर का, और द पर्सन हु प्लेस इन द होल, ठीक है। तो वो चीज एनगैंचे उस टाइम से आती आ रही है, दैट पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन कमिंग डाउन टू अस सिंस दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। As a boy, not only is he one of the finest prospects from the Leprosa Academy, he also has a tremendous future ahead of him because despite his size, he manages to go past one, two players, dribble, score, but above all, he enjoys himself on the ball. Gambetiar to dribble. Gambetiar is again another South American word which connects to dribbling. Okay. Enganche, the words, the concepts, all very Argentinian. Leo was not the cover star of edition 97 of that supplement. That was left to Claudio Paris of the first team, who had decided a few days earlier to stay with the club. Okay. नेवल्स ओल्ड बॉयज का एक लोकल न्यूज़पेपर सप्लीमेंट में लियो कवर स्टार नहीं थे शुरुआत में, एक क्लॉडियो पेरिस करके एक थे प्लेयर जो कवर पे थे उस टाइम पे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस फॉर द फर्स्ट टीम, ठीक है। So everybody who's joined us, thank you all for joining in. I hope you guys have liked this tape. I hope you guys have shared it with your friends as well, and I hope you guys are have enjoyed the first few minutes of the book reading session. I know I'm going a little bit descriptive as well, but थोड़ा सा मतलब हिंदी में भी अनुवाद करना पड़ेगा for all of the people who are watching us and trying to understand this particular concept as well. So I'm trying to make it बहुत बहुत simple for you guys. So I hope you guys enjoyed. Thanks. All right, moving on. A black and white photocopy of the article made its way across the Atlantic. Jorge and his son Leo and the friend who was traveling with them to Ezeiza airport discussed the article as they made their way from Rosario to Buenos Aires. The journey of 3 and a bit hours seemed longer than that as they traveled along a straight, boring road featuring little else but valleys and traffic signs. Leo gazed out of the window from the back seat. It was 17th September 2000, a Sunday. ये एक सेपरेट लाइन लिखी है गाइस, सो इट इज अ वेरी वेरी क्या मतलब इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल लाइन, क्योंकि इसी दिन शायद अभी हम बुक से जहाँ जा रहे हैं, हम मुझे समझ में आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एजेजा एयरपोर्ट, अगर आप if you make a quick if you do a quick Google, which I am doing right now, you will understand that Ezeiza airport कहाँ है, ठीक है। Ezeiza airport is uh, Ezeiza airport is in Greater Buenos Aires, right? और वो उधर से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे वो भी हम आपको बताएंगे। But it was 17 September 2000, a very it's a monumental date, ठीक है, a Sunday. It's a monumental date, and I'll tell you why it's going to be a monumental date. From Ezeiza, with the knowledge only of those closest to them and the school principal. That is why. Let's connect this to the statement. Where is Lionel Messi? अभी तक 2-3 बार मैंने वो statement पढ़ा है. Where is Lionel Messi? From Ezeiza, with the knowledge only of those closest to them and the school principal, they left for Barcelona. A 24-hour journey lay ahead of them. All right. So on this date, Lionel Messi left for Barcelona from Argentina. 17th September 2000, a Sunday. The first journey was good because it was a completely new experience for me. I had never flown before, never undertaken such a long journey, and I enjoyed it all until the aeroplane started to move about a bit. This is Leo Messi. Leo Messi ने ये वाली चीज बोली थी रीविस्टा बारसा को. रीविस्टा बारसा was a publication at that particular point of time. तो उन्होंने remembering that incident बोला था कि पहली जर्नी बहुत कंप्लीटली न्यू थी, बहुत कंप्लीटली नई एक्सपीरियंस थी उनके लिए। उन्होंने कभी फ्लाइट नहीं की थी, मतलब एरोप्लेन में कभी फ्लाई नहीं किया था, उन्होंने कभी इतनी बड़ी जर्नी अंडरटेक नहीं की थी, एंड उनको थोड़ा सा डर भी आ गया था क्योंकि एरोप्लेन थोड़ी मूव कर रही थी, ठीक है। तो वेरी इनोसेंट स्टेटमेंट टू मेक, बट या, memories can play tricks on you. In truth, the flight experienced a lot of turbulence. When the first meal was served, Leo didn't eat, sleeping instead, stretched out over 3 seats. मतलब पूरा राजा राजा पूरा पहले से ही राजा थे भाई, मतलब तीनों सीट पे मतलब पूरे लियो वैसे पूरे स्ट्रेच आउट होके सो रहे हैं गदर, ऐसा ऐसा लग रहा है कि शताब्दी में जा रहा है तो वैसा जोन। बट या, in his short trousers with his skinny little legs, he felt nauseous. His stomach was churning.
he slept fitfully and felt sick. Years later, and with great frequency, he would feel the same nausea before running onto the pitch and would sometimes ask himself if that feeling of sickness he had experienced on that flight really had been caused only by turbulence. ठीक है, सो अभी वो जो सिकनेस, उनको फ्लाइट सिकनेस जो महसूस हो रही थी, तो उनको मतलब उनको ऐसा वंडर, वो बाद में सोचने लगे कि यार ये उस टाइम पे जो मुझको तबीयत खराब लग रही थी वो खाली फ्लाइट टर्बुलेंस की वजह से थी कि कुछ और भी था, कि मैं इतना बड़ा क्लब को जा रहा हूँ, बार्सिलोना जा रहा हूँ, क्या होगी एक्सपेक्टेशंस मेरी उस उधर, तो विल आई बी एबल टू स्लॉट इनटू द फर्स्ट टीम देयर, क्या ये सब भी, क्या ये डर था उनके दिमाग में, दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग. So party arrived in Barcelona at midday on Monday. ठीक है, 18th September. ठीक है, 18 सितंबर को वो आए. ठीक है, पहली बार बार्सिलोना में लैंड किए. 7 months after taping a home video that demonstrated in some eyes that Messi was the new Maradona, and in others, more familiar, closer to him, that his was a natural talent that could help him make it as a footballer if everything went according to plan. 7 महीने पहले एक बढ़िया सी एक वीडियो आई थी, बहुत वायरल वीडियो आई थी, जिसमें हमने उस टाइम पे तो बहुत ऐसे बच्चों की वीडियो बहुत देखे जिसमें मेसी ड्रिबल करके पूरा मैराडोना एस्क वाली वाइब दे रहे थे, एंड पीपल हु डिडंट रियली नो हिम, वो सोच लगे कि भाई ये होगा हमारा नेक्स्ट मैराडोना. द पीपल हु न्यू हिम, डर, इस बात का डर था उनमें कि क्या चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान जाएगी, क्या मैसी डेफिनेटली मतलब जाएंगे ऊपर, एंड इट वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग. सात्विक क्या, सॉरी नहीं, सात्विक नहीं, एफसी बार्सिलोना कूलर नहीं आया समझ. क्या नहीं आया समझ, बताओ बताओ, मैं ट्राई करूंगा समझाने को. एंड एफसी बार्सिलोना कूलर का और एक जो मैसेज है ये भी, गाइस प्लीज गाइस डू मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और भी ऐसे ऐसे स्ट्रीम्स आएंगे. और अभी तक कैसा लगा है, कुछ अगर डाउट है, कुछ कमेंट्स है अबाउट व्हाट एवर आई हैव रेड सो फार, प्लीज डू. जैसे एफसी बार्सिलोना कुनियल ने बताया नहीं आया समझ, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं आया समझ, तो प्लीज डू लेट मी, प्लीज डू कमेंट. अरे कहाँ मेसी आ रहा, अरे मेसी अभी भाई, मेसी बुएनस एयर्स छोड़ दिया. ठीक है, मेसी ने अर्जेंटीना से फ्लाइट पकड़ी, पहली पहली बार फ्लाइट पकड़ी. ठीक है, उसके बाद आए हैं अभी बार्सिलोना, पहली बार बार्सिलोना आए हैं. ठीक है, तो वो जो पहली बार बार्सिलोना 2000 को आए थे, और वो था डेट जो था, मैंने बोला था सितंबर, 17 सितंबर को लेके आए थे. ठीक है, 17 सितंबर 2000 को उन्होंने अर्जेंटीना छोड़ा टू जॉइन बार्सिलोना एज अ वेरी वेरी यंग बॉय. ठीक है, तो वो चीज. हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं लेट आया हूँ, पता नहीं क्या चल रहा. हाँ ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ भाई, ये वाली. ठीक है, जस्ट स्टार्ट की है. ठीक है, जस्ट स्टार्ट की है, तो वो चीज अभी चल रही है. हाँ अच्छा, ओल्ड स्टोरी है, यस यस. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो हाँ, तो as soon as now we have understood that Messi has landed. ठीक है, तो next thing, someone brought Messi a kilo of oranges and some tennis balls. They asked him to practice with them for a week. 7 days later, they recorded the VHS tape, which showed him making 113 touches with an orange. By sure, 113 touches, bhai. 113 touches, crazy. With the tennis ball, it was easier. 140 jueguitos, as they say in Argentina. 140 kick-ups. ठीक है, 140 kick-ups with the tennis ball was comparatively, भाई इधर तो kick-ups 140 तो हो नहीं पाएगा, वो तो different चीज है. But 113 touches with an orange is madness. ठीक है. So that was the tape that I was talking about. That was the tape that made people believe that Maradona-esque वाली कुछ चीज है इसमें. ठीक है, तो वो चीज थी. Next, there was a table tennis ball lying around. Give it to Leo. They gave it to him. 29 touches in a row. 29 touches in a row. Table tennis ball. Ah! All right. They gave. There was a table tennis ball lying around. Give it to Leo. They gave it to him. 29 touches in a row. You try it. See if you can reach 3. This Leo had an advantage over you. He spent all day, every day with the ball. Between games, during the game, at home, in the schoolyard, every
blessed day. 8 years later, MasterCard released an advertisement using some of those same images. You can see it on YouTube. ठीक है, मास्टर कार्ड का एडवर्टाइजमेंट भी हम देख लेंगे. ठीक है, अगर कोई अब भी बढ़िया जो है 41 लोगों में से कोई देख रहा है, वो मास्टर कार्ड का एडवर्टाइजमेंट कुछ रिलीज कर सकता है जिसमें यूलियो मेसी के कुछ कुछ इमेजेस हैं, तो वो भी डाल दो चैट पे. ठीक है, ताकि और दूसरे लोग भी देख पाए. तो वही चीज हुई 8 years later after that incident. ठीक है. And since February, when the video was recorded, the Messi family would ask themselves, when are we going? Where are we going? Are we going? It became the daily topic, one discussed both with uncertainty and a hint of excitement. The video, along with others taken at the Malvinas pitch, showing Leo in his Neville's shirt performing his slalom like runs and dribbles, landed on the desk of Josep Maria Minguella, a well-known players agent with a lot of influence at Barcelona. ठीक है, तो जिनको नहीं पता, जोसेफ मारिया मिंगुएला एक बार्सिलोना के लिए एक बहुत अहम फिगर थे व्हेन इट कम्स टू गेटिंग प्लेयर्स इनटू द क्लब. ठीक है, तो जो वीडियो थी, ये जो वीडियो जो बात की अबाउट हिम बैलेंसिंग ऑरेंजेस, टेकिंग टचेस विद ऑरेंजेस, टेकिंग टचेस विद दोस टेनिस बॉल्स, ये वीडियो जो है इतनी वायरल हो गई कि जोसेफ मारिया मिंगुएला जो है उनके डेस्क पे आके आ गई. ठीक है, तो उन्होंने ये देखा वीडियो. ठीक है, तो ही wasn't too sure at first. The age and distant location of the youngster put doubts in his mind, and he would not be the only one, because in the end, though, months later, convinced partly by the spectacular technical skills Leo showed on the tape, partly by the insistence of colleagues who had faith in the boy's future, he decided to put all his weight behind the project and persuaded Barcelona to give him a try. तो उन्होंने अपनी डाउट्स को साइड में रखा, बोला कि ठीक है, आई ट्रस्ट माई आईज, आई टेस्ट पे ट्रस्ट करूंगा, एंड मैं पूरा का पूरा बैकिंग मैं इस बच्चे को दूंगा, ताकि वो बड़ा बड़ा होके बहुत he could be the legend that he is right now today, and he persuaded Barcelona to give him a trial. ठीक है, so this is what has happened up until now. So I will reread that statement again. He decided to put all his weight behind the project and persuaded Barcelona to give him a trial just before Real Madrid made their own initial move to try to sign him. I'll let that fester. Who knew about this particular fact? कि रियल मैड्रिड पहले रियल मैड्रिड भी आई थी मेसी को साइन करने. If Messi would have played his cards wrongly, ठीक है, wrongly, तो शायद रियल मैड्रिड लेके चली जाती, बट या ठीक है. So from his office, Minguella called Argentina to tell the Messis to get their things together and come to Barcelona as soon as they could. Bring the boy. Leo was about to fly for the first time. So ये फ्लाइट की स्टोरी अभी बताएगी कि मिंगुएला को समझ में आया कि भाई मेसी में तो बहुत टैलेंट है. ठीक है, मेसी में तो बहुत टैलेंट है, तो उन्होंने बोला कि तुम लेके आ जाओ अपने बच्चे को, इधर लेके आ जाओ अपने बच्चे को, एंड ट्रायल करवाएंगे तुम्हारे बच्चे का. तो पहली बार फ्लाइट इसी वजह से हुई कि जोसेफ मारिया मिंगुएला ने बोला कि भाई ये वीडियो बहुत सही है, तुम्हारे बच्चे बहुत टैलेंट है, लेके आ जाओ, सिंपल चीज. ठीक है, सो हाँ. And to cross the Atlantic for the first time. Out of the airplane and into a humid Barcelona towards the end of summer stepped a 13-year-old Argentinian boy with talented feet and a suitcase. 13 साल की उम्र में आए बार्सिलोना. With the dream of succeeding against new rivals and with new companions at a big club far, far away from home. Those who saw him for the first time so small thought that Barcelona had made a terrible mistake. All this effort for this? How was someone so small ever going to become a good footballer? I started to follow Barcelona at the time of Ronaldo, and shortly afterwards came the opportunity to come here. At that time, to tell you the truth, I was very excited and very keen to come here to see what everything was like, because I was seeing it from a long way away. But when I got here, I didn't know how difficult it was going to be. ये जो छोटा जो है आए से जो मैंने शुरू किया, ये लियो मेसी ने खुद बोला वापस रिविस्टा बार्सा को कि रोनाल्डो के वजह से, रोनाल्डो के टाइम से, वजह से नहीं, रोनाल्डो के टाइम से बार्सिलोना को फॉलो करते आए हैं. एंड
बस उसके बाद से एक्साइटमेंट था उनको बार्सिलोना के लिए खेलते हुए. So yeah, it wasn't Lionel Messi who arrived in Barcelona that day. It was just an excited kid. Dave Sudbury's song, The King of Rome, says that when you live in a dump like the West End of Derby, you can't live out your dreams. I know that, says someone who wants to challenge destiny. A man can crawl around or he can learn to fly, and when you live round here, the ground seems awfully near. In Rosario in 2000, it was harder than ever to learn how to fly. Neville's rejected the chance of helping the Messi family, who needed a great deal of money to pay for the hormone injections that Leo so badly needed to help him grow. Had they paid for them, the young Leo would never have left Argentina. This is a very interesting thing. Neville ने मना कर दिया कि भाई हार्मोन इंजेक्शंस के पैसे हम नहीं दे सकते. ठीक है, और वो तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने मेसी की हिस्ट्री के बारे में जाना है, Messi had this thing. He needed hormone injections on a very regular basis, and if they would have the money, if they would have had the money to pay for Messi's hormone injections, Messi would never have left Newell's Old Boys. He would have stayed in Argentina. So yes. तो अभी थोड़ा कमेंट्स ले लेते हैं. Josep Minguella didn't work for Barcelona. He had a massive influence at Barcelona. Josep Maria Minguella had a massive influence at Barcelona, and he helped in indirect influence की वजह से he helped a lot of players come into Barcelona. ठीक है, he was a player agent. He was a player agent and a lot of influence in Barcelona. All right. Imagine CR7 and Messi in the same team 2008. भाई पागल हो जाते भाई लोग, पागल हो जाते. A little boy from Rosario on behalf of every little boy wearing his shirt. All right. Both Messi and Ronaldo close to joining the rival clubs soon. Yes. Winger, false nine, right winger, now final of the finest creators. Messi's transitions through these stages have overlapped, often making it difficult to label his position. Yes, we'll come to that. We'll come to that. Barca were not sure if they would sign him for such a fee by because of the ultimatum of Messi's entourage and lack of time and other clubs are approaching. The contract was signed on tissue. We'll also come to that. बहुत बहुत लंबी जर्नी है. आएंगे. बहुत डिस्क्रिप्टिव जर्नी है, बट आएंगे. ठीक है. Loving it, sir. Thank you. Great content, Guruji. Thank you. Thanks a lot. All right. Let's continue. ठीक है. Okay. Nobody knew of anyone who had crossed the Atlantic so young in search of their footballing fortune. 13-year-olds certainly didn't leave Argentina, nor was it usual for European clubs to sign foreign players of such a tender age. No one had ever had such an opportunity so early. So इतनी जल्दी किसी के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी अर्जेंटीना में कि वो बाहर एक मेजर यूरोपियन क्लब के लिए शायद खेल पाए. ठीक है, लियोनेल मेसी वाज वन ऑफ द फर्स्ट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि वो 13 साल की उम्र में ही आ गए. ही लैंडेड इन बार्सिलोना. So yes, back at Las Heras, nobody had the faintest idea what was going on. Leo has hepatitis. Yes, that will be it. ठीक है, अभी तक हेपेटाइटिस वाले जोन पे मीडिया क्या बोलते हैं, कौन सी चैनल थी वो, आज तक टाइप हेपेटाइटिस वाले जोन पे मीडिया वाला जो है ना सीन, आज तक टाइप न्यूज पे जी रहे हैं. बट या in Barcelona, Minguella had been told that if Barcelona were prepared to meet the cost of the expensive growth hormone treatment and his father got a job, thus fulfilling the necessary regulations for the transfer of the youngster, Leo would come to them. So, though, क्या बोलते हैं, there were two things that needed to happen before Leo Messi could join Barcelona. ठीक है, कि अगर उसके डैड को एक जॉब मिलती, ठीक है, and if Barcelona were willing to probably give him the money for the hormone treatment, which was expensive. Let's face it was expensive. ठीक है, तो अगर उनके डैड को जॉब मिलती और ये दोनों चीजें फुलफिल होती तो ही वो बार्सिलोना आता है. ये दोनों चीजें फुलफिल करने को बार्सिलोना अग्री कर गई थी. इमेजिन the early detection of this man's talent from the club itself. So hats off. तो वही चीज हुई थी.
There were calls to Real Madrid and Atletico de Madrid, but nothing concrete emerged. Real Madrid, Atletico Madrid को भी बोला गया कि क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे, बट रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड के साथ ये कॉल्स या कॉन्वर्जेशंस कोई जगह तक गई नहीं, कोई प्रोडक्टिव नहीं हुई ये कॉन्वर्जेशंस, तो वो चीज़ हुआ. In any case, if Barca show interest, better with Barca was the rationale of all those who had worked to seal the transfer. So अगर होता भी, and अगर Barca was still in this particular space कि हम ही करेंगे, मतलब बट मतलब हम देंगे तुमको जो पैसा चाहिए तुमको, एंड तुम्हारे डैड को भी जॉब देंगे. तो इफ बारसा वर स्टिल विलिंग टू डू दैट, देन he would have chosen Barca. He would have definitely chosen Barca over Atletico Madrid and Real Madrid as he spoke here. ठीक है. अभी जोसेफ मारिया मिंगुएला के वर्ड्स मैं बोलूंगा जो उन्होंने बोले थे अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर और अबाउट द प्लेयर इटसेल्फ. ठीक है. जोसेफ मारिया मिंगुएला. Most of us involved in this were not used to dealing with such young players. For example, I came into contact with Pep Guardiola, or he with me when he was 20 years old. So I became his first agent at the time he was coming into the first team. Wow, first agent of Pep Guardiola, Josep Maria Minguella. All the machinery that is now in place for players of 12, 13, and 14 years old was not there at the time. So when our contacts in Argentina spoke to us about a youngster who was different, my first reaction was, right, what are we going to do with a boy of his age? I doubted it at first, but in the end, they insisted so much, I started to take it seriously. I received a video. The one where he picks the ball up practically from his own goal mouth and dribbles it past about 1,000 people and scores. And yes, he struck me as something different. A few months later, I spoke with the president Juan Gaspart and Anton Pereira, sporting director, and Charlie Rexack, technical director and advisor to the president. तीन लोगों से बात की. जोआन गैस्पार्ट, स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो है एंटोन परेरा, और टेक्निकल डायरेक्टर जो है और एडवाइजर जो प्रेसिडेंट है वो है चार्ली रेक्सैक. तीनों के साथ बात की एंड फिर फाइनलाइज करा. पहले एजेंट थे पेप गार्डियोला के, ठीक है, वो भी हमको समझने में आया ये पर्टिकुलर उनके कॉन्वर्सेशन से. अभी चार्ली रेक्सैक क्या बोलते हैं इस ट्रांसफर के बारे में वो पढ़ते हैं. Playing tennis one day, Minguella told me he knew of a boy who was a phenomenon, a bit similar to Maradona. But I've heard that many times. And then later he told me he was in Argentina. I thought, a youngster about 18 or 19 years old. Then Minguella told me he was 13 years old. I said, are you mad or what? Do you think I'm going to put myself there? No way. No way. So, ऑब्वियसली रेक्सैक को भी थोड़े से मतलब डाउट्स होते होंगे, बिकॉज 13 साल का बच्चा है यार. 13 साल के बच्चे को इतना बैक करेंगे क्या? सो दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग कि 13 साल का बच्चा है, विल वी बैक हिम दैट मच? दैट्स व्हाट हिज डाउट वाज. सो दैट वाज चार्ली रेक्सैक. ठीक है. कार्ल्स रेक्सैक भी बोलते हैं उसकी प्यूरिट्स, बट चार्ली रेक्सैक भी मतलब इधर बुक में तो एग्जैक्टली चार्ली रेक्सैक लिखा है. योआक्विम रीफ, who was the director of the academy at Barcelona. इनके वर्ड्स अब सुनते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे थे उस पर्टिकुलर ट्रांसफर के बारे में. I was the director of the academy at Barcelona and I eventually got offered the boy. Charlie Rexach was the technical director of Barcelona and obviously centered more on the first team. What happened was that Charlie Rexach is a good friend of Josep Maria Minguella, who was the one who introduced the lad to FC Barcelona. So he listened to what he had to say about the kid. सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज जॉयक्विम रिफ ने बोली, जो है डायरेक्टर एकेडमी के, बार्सिलोना की एकेडमी के डायरेक्टर थे उस टाइम पे, कि जोसेफ मारिया मिंगुएला ने अपना दिमाग बना लिया था कि भाई मतलब ये तो क्रेजी वीडियो है जिसमें पूरा के पूरा ड्रिबल करके, पूरा अपने हाथ से ड्रिबल करके चले गए आगे, ठीक है, तो इसको तो साइन करना ही है. एंड ही समहाउ इन्फ्लुएंस जोआक्विम रिफ एज वेल कि भाई मतलब तुम भी आ जाओ. ठीक है, चार्ली रेक्सैक को तो इन्फ्लुएंस कर ही दिया था. चार्ली रेक्सैक अगर एडवाइजर है प्रेसिडेंट को, वो तो बड़ा, वो बहुत बड़े पर्सन को उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था. तो इसीलिए जोआक्विम रिफ भी मतलब बहती गंगा में उन्होंने हाथ धो दी. सिंपल चीज. थोड़ा कमेंट ले लेते हैं.
नहीं, आज रात को मैं थोड़ा चिल करूंगा या थोड़ा फैमिली को टाइम दूंगा, थोड़ा चिल करूंगा, ठीक है, वो भी चीज़ है। Anonymous with Guruji love, thanks here. Lucky Reds, thanks here. 51 people are watching. Like the stream and subscribe to the channel. Please do, guys. Please do. Helps a lot. Helps a lot. Thanks जो भी join कर रहा है. Thank you. All right. Let's start resuming this particular stream. Now Charlie Rexac. ठीक है, चार्ली रेक्सैक भी अभी बोलते हैं वापस कुछ वर्ड्स बोलते हुए about this transfer. There's a process here. If they say to me that there's a kid, for example, in Zaragoza who is a phenomenon, I ask, who is he? Where does he play? And where do I have to go to watch him? Then I send two or three people to study him, and then if one of them says yes and the other no, I go myself and have the casting vote. Later, you have to try to find him a place in the team and a number of other things. Another possibility is that an ex Barcelona player, let's say Rivaldo, says to me, listen, there's a 12 or 13-year-old boy in Brazil who's a fantastic footballer. I'll take notice immediately because when it's someone like Rivaldo who's telling you this, you take it into account. If someone else tells me, I'll suspend judgment on it for the time being. But even if Rivaldo says go and see him, I will say no. Let's do it the other way around. If he's so small and he's coming from so far away, send him to me here. We'll keep him for 15 days so the coaches at the academy can study him at their leisure. And if in the first few days he's a bit nervous, he'll get over it. Imagine if we go all the way to Argentina or wherever and the lad becomes ill or can't play or whatever. He has to be very good for us to skip the rules and regulations. ठीक है, ये लास्ट लाइन इज बेसिकली समरी ऑफ द होल थिंग दैट चार्ली रेक्सैक सेड. ही हैज टू बी वेरी गुड फॉर अस टू स्किप द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, तो दिस इज मतलब यू चार्ली रेक्सैक वाज मतलब ही इज अथॉरिटेटिव एटीट्यूड को उन्होंने कभी नीचे नहीं गिराया. उन्होंने बोला भाई अगर है बंदा ही शुड कम टू अस. इफ वी गो टू देम वी आर एट अ लॉस. It's an authoritative. He's an authoritative figure. If we go to him, we are at a loss. ठीक है, he should come to us and we should see how he मतलब उसका how he adjusts to this the demanding club that FC Barcelona is. ठीक है, so इसलिए the last statement थी, it makes a lot of sense जो है, he has to be very good for us to skip the rules and regulations. That was the cutthroat competition at FC Barcelona. जैसे उसको पूरे बोलते shows how it is to pass through scout scrutiny and become a pro. Yep, true to some extent. Yep, but again you have to be that good to actually escape a scout scrutiny. तो वही चीज है. जोसेफ मैरिया मिंगुएला के थोड़े और words. The parents and the boy were going to leave Argentina anyway, come what may. If they had been unable to stay in Barcelona, they would have tried other clubs. I told Charlie that he was following a course of treatment that the clubs in his country were not paying for, and that Barcelona would have to make themselves responsible for this treatment. Okay. I'll read it again for a lot of other people who are just probably joining us. The parents and the boy, जोसेफ मारिया मिंगुएला बोलते हुए कि दोनों पेरेंट्स और जो है मेसी दोनों वैसे भी अर्जेंटीना छोड़ने वाले थे. ठीक है, तो अगर वो if they had been unable to stay in Barcelona, they would have tried other clubs. दूसरे क्लब को ट्राई कर लेते. ठीक है, I told Charlie that I was following a course of treatment that the clubs in his country were not paying for, and that Barcelona would have to make themselves responsible for this treatment. तो मतलब जोसेफ मारिया मिंगुएला ने थोड़ा मतलब कन्विंस किया चार्ली रेक्सैक को कि you would need to actually accept the conditions of Messi कि भाई मेसी स्कैम सॉरी कि उसकी हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए आप तो पैसा दो एंड दूसरा उसके डैड को भी आप जॉब दो. सो जोसेफ मारिया मिंगुएला हैज बीन हार्पिंग ऑन अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. ठीक है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट एडमायरर ऑफ मेसी एंड चार्ली रेक्सैक के साथ वही बातें वही करते थे. तो चार्ली रेक्सैक ने फिर उनसे बोला कि सो मिंगुएला हु आई ट्रस्ट वेरी मच सेड टू मी देयर इज अ ब्लोक दे टेल मी इज अ फिनोमिनन, सो हाउ डू वी डू इट. And so, since Minguella had received the video that displayed Leo's keepy uppy and dribbling skills, the months passed by that way. Oh, I don't know. Maybe he's too far. He's too young. That was the confusing message that reached the family from Barcelona. Months of uncertainty for the Messi family, who asked,
what had happened to that tape, the interest and the contacts, what was going to happen to Leo, what should they tell him. So ना एक वो टर्म होता है जो इंसेप्शन में भी यूज हुआ था, वो टर्म मैं भूल रहा हूँ। एक होती है कि तुम्हारी ना जो जर्नी है बीच में कभी कभी तुम्हारी जर्नी ना एकदम सहम जाती है, तो तुमको पूरा समझ में नहीं आता कि ये सहमी हुए पार्ट में मतलब तुम सक्सेसफुल रहे हो या तुम फेलियर रहे हो। ठीक है, तो वो एक स्टॉल हो जाती है तुम्हारी जर्नी। ठीक है, इस टाइम पे मेसी की ना सिलेक्शन, मेसी के कैंप को समझ में नहीं आ रहा था कि डज मेसी हैव फ्यूचर एट एफसी बार्सिलोना, और हैव दे कम फॉर a fruitless but like fruitlessly they have come down to Barcelona। ठीक है, तो वो समझ में नहीं आता मेसी के कैंप को, क्योंकि कोई सॉलिड डेफिनेटिव आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, बिकॉज पहले मिंगुएला ने रिसीव तो कर दिया वीडियो, उनको बुला तो लिया इधर। ठीक है, बट ये भी चीजें कैंप से आई थी कि अरे शिट यार, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये काफी यंग है यार, पता नहीं विल ही बी एबल टू मेक इट और नॉट। तो ये सब ना गॉसिप रूमर्स आ रहे थे। ठीक है, कैंप से। तो इसलिए मेसी फैमिली को समझ में नहीं आया कि इज दिस द फ्यूचर दैट दे वांट टू एक्चुअली हैव देयर kid, is this the future that they envision for their kid, that is Lionel Messi. So that is why they were a bit unsure about this trip. But as we move on, Charlie Rexack. So I said to Minguela that I was not prepared to travel so far to see a boy of 12. Satvik, yes, limbo a term. Limbo. Yep. Satvik, thank you. So Charlie Rexack वापस बोलते हुए, so I said to Minguela that I was not prepared to travel so far to see a boy of 12. Had he been 18 or 20, that's what I was saying. कि मतलब 12 साल की उम्र के बॉय के लिए वो ट्रैवल नहीं करेंगे। 18-20, yes. Anyway, that's when I told him that by Easter or Christmas or whenever, we had to find a date for the boy to come over with his parents and stay here for 15 days. रीफे जो हुआ क्वीम रीफे के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहा था अभी करंटली जस्ट बिफोर, थोड़ा 5 मिनट पहले, जो है बार्सिलोना की अकेडमी के डायरेक्टर। ठीक है, रीफे ने बोला आई टोल्ड रेक्सैक दैट आई ऑर्गेनाइज्ड द गेम सो ही कुड वॉच द बॉय। ठीक है, Gaspard, Pereira, Rife, Minguela, Resac. Barcelona royalty to deal with a 13-year-old boy coming from Argentina. Absolutely. Heavyweights. And the significance of the presence of these fathers to the young boy did not go unnoticed by the academy trainers who would be responsible for judging and training him for the next 2 crucial weeks. तो अभी अकेडमी के ट्रेनर्स के ऊपर आ गई थी बात कि अब तो यार ये सब द बिग गन्स आर एक्चुअली वाउचिंग फॉर दिस किड, तो अभी वी हैव टू ट्रेन हिम एंड वी हैव टू ट्रेन हिम रियली सक्सेसफुली, अदरवाइज दीज बिग गन्स वुड बी डिसअपॉइंटेड एट अस ओनली। तो आई थिंक दैट वो चीज आ गई थी, एंड वो चीज का प्रेशर था बार्सिलोना के ट्रेनर्स पर, जिसके कुछ एक ट्रेनर जो है रोडोल्फो बोरेल, तो वो क्या बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर प्रेशर के बारे में, वो पढ़ेंगे अभी। I remember that one day in the office, someone, I can't remember who, gave me 2 black and white double-sided photocopies. An article from an Argentinian newspaper that talked about Messi, and they told me that this boy was coming over for a trial. I've been looking for these photocopies. I'm sure that they are at my parents' home. I should find them. I remember it because it was the first time I heard the word gambetta, dribbling, and the word enganche, which is a very Argentinian word used to describe the player who plays just behind the striker. They told me that the youngster was going to be in my group because he was born in 1987. I have always said that the reason I trained Messi first is only because I was responsible for the training of that under 14 side. I'm sure you have heard that there are 10,000 trainers who claimed to be the first to coach him, no? Absolutely. First to coach him, Rodolfo Barrel, जो थे उनके अंडर 14 साइड को उन्होंने कोच किया था। तो रोडोल्फो बोरेल, लियोनेल मेसी के पहले कोच, एंड उन्होंने वही बोला कि उन्होंने लियोनेल मेसी के बारे में जो बातें हैं उन्होंने पहली Argentinian newspaper से पढ़ ली थी। तो this also shows the amount of research that goes on at Barcelona from a very long amount of time. तो ये सब चीजें हो रही थी उस टाइम पे। Waiting for them at Pratt Airport in Barcelona was Juan Mateo from Minguela's office, who took them to the north of Barcelona where the agent was based. In the lift, the Messis crossed paths with
Chicky Begorstein currently working at Manchester City, but he was at that time the future sporting director of Barcelona and someone close to Minguella. Okay. We are from Argentina, one of them dared to say, and Chicky, ruffling Leo's hair, said, "This boy must be good. He is small." वाओ वाइब्स चिकी पैगस्टाइन सीधा मतलब इमेजिन लिफ्ट में खड़े हैं एंड देन ऐसे नीचे देखा कि ये बच्चा छोटा बच्चा है एंड देन दे से शिट इफ दिस गाय इज स्टैंडिंग बिसाइड मी ठीक है he must be good if he is at Barcelona in this lift right now with me he must be good but he's fucking small he must be good so I think that was the reaction that Chicky Peglostein was feeling so that was there. After talking with the Catalan agent, Jorge and Leo, Jorge Messi, जो है Leo के dad, Jorge and Leo made their way to the Hotel Plaza. It was not Barcelona who paid the expenses for this trip. They never did. Please note, they never did. Minguella, who knew the owner of the hotel situated in the Plaza España, arranged for the Messis to stay in room 546 of the hotel. Fuck the detailing by Guillem Balague, crazy. Room 546 of the Hotel Plaza में रुके थे Messis, ठीक है, which had views. From the window, they could see the halls of the Barcelona Exhibition Center, and away in the distance, the National Palace and the Montjuic fountain that lit up at night in a blaze of color to the sound of synchronized music. Closer were the towers that flanked the Avenida Reina Maria Cristina. Avenida Reina Maria Cristina, एक जगह का नाम है, which was erected for the Universal Exhibition of 1929. एक establishment है, एक आप बोल सकते हो कि it is somewhat like what I'm just imagining it may just be like a showpiece of some sorts, which was erected because हाँ क्या बोलते हैं कहाँ पर था which was erected for the Universal Exhibition of 1929 ठीक है establishment नहीं establishment तो building हो गई ठीक है installment जो होती है एक statue type वो हुई थी तो एंड इन द फोरग्राउंड द फाउंटेन ऑफ द ये मैं व्यूज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो क्या बोलते हैं उसके रूम के अराउंड के व्यूज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है and क्या बोलते हैं and in the foreground the fountain of the Plaza España a classical allegory of the country with sculptures that symbolize the rivers that flow into the three seas that wash the shores of the Iberian Peninsula. That was the view that Lionel Messi and the camp had at room 546 of Hotel Plaza after talking with the Catalan agent. ठीक है तो ये चीज थी यार कोई अगर क्या बोलते हैं कोई अगर हाँ मॉडरेटर है तो ये थोड़े मतलब स्पैम वाले कमेंट्स आ रहे हैं प्लीज देख लीजिएगा ठीक है थैंक यू ऑलराइट मूविंग ऑन Leo Messi left his suitcases in the room. The young footballer was feeling a little better, but still weak after the bumpy flight. Even so, Rife had let Jorge know that he wanted to see Leo train. Today, at 6 o'clock, he had to go. Rodolfo Borrell would be his first trainer at FC Barcelona. Rodo, now director of the Liverpool FC Academy, was for the 2001 season in charge of the Infantiles A side that would later become historic. 2001 season के Rodolfo Borrell जो है वो थे इन चार्ज ठीक है एंड इन्फेंटाइल्स ए साइड बोलते थे और उसमें जो प्लेयर्स के नाम है वो नाम आप सुनोगे अभी तो पूरा वाह वाह करोगे प्लेयर्स के नाम थे सेस्क फैब्रेगास जेरार्ड पीके मार्क पेद्राजा मार्क वैलियंटे विक्टर वास्कुएज टोनी काल्वो सीतो रिएरा राफाएल ब्लास्कुएज इसमें से एटलीस्ट 3 लोग के नाम तो आप बहुत इजीली आप समझ पाओगे विक्टर वास्केज सेस्क फैब्रेगास एंड जेरार्ड पीके ये सब लोग के साथ मेसी पहली बार खेले one of the best junior sides that Barcelona have ever had and now they were adding to it with a player who had arrived with something of a reputation of his own. That Monday afternoon those in charge of the academy
क्विमेट रिफे, अभी उनके नाम में बोल रहा हूँ जो इंचार्ज थे अकेडमी के, क्विमेट रिफे, क्विके कोस्टास, यूएन मैनुएल असेंसी, द कोचेस रोडोल्फो बोरेल, जावी लोरेंक एंड एल्बर्ट बेनाइजेस, ये सब थे in charge of the academy. That Monday afternoon, those in charge of the academy met on pitches 2 and 3 next to the mini stadium, one with grass and the other with artificial turf, to follow the progress of the group and especially the new boy. Charlie Rexach was not present, having gone to Australia to watch the games at the Sydney Olympic football tournament. That was packed with well known young players, among them Tamudo, Javi, Puyol, Zamorano, Suazo, Mboma, Lauren एंड एटो. ठीक है, तो चार्ली रेक्सैक उस टाइम पे नहीं थे. चार्ली रेक्सैक चले गए थे ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के गेम्स को देखने को, क्योंकि उधर ऐसे सब जो धुआंधार प्लेयर्स के नाम लिए अभी करंटली, वो प्लेयर्स उधर खेल रहे थे. चार्ली रेक्सैक उधर गए थे. ठीक है, तो जब पहली बार मेसी ट्रेन करने आए थे, मेसी ट्रेनिंग की विद यंग इन्फेंटाइल्स ए साइड रोडोल्फो पोरेल के साथ, चार्ली रेक्सैक नहीं थे. चार्ली रेक्सैक उस टाइम पे नहीं थे क्योंकि वो सिडनी में थे. But in truth, the matter of a young Argentinian boy did not require his presence. His prime responsibility lay with making decisions about the first team, not the academy. If down in that cauldron of talented youth they could all agree, then the boy recommended by Minguella. Look, Joe. Man, next. If down in that cauldron of talented youth they could all agree, then the boy recommended by Minguella would be signed. If not, he wouldn't. चार्ली had arranged the trial. For the time being, he didn't have to do much else. ठीक है, तो चार्ली ने तो अरेंज कर दिया ट्रायल. ठीक है, अब it all depends on the boy. Charlie Rexach can't do much now. Charlie Rexach का primary job है कि he has to set the first team in order. He doesn't have to set the academy in order. ठीक है, so academy के लिए, if all of the people who are in charge of the academy, if they agree with Charlie's decision, only then can Messi be signed up for FC Barcelona. Charlie can't exactly make that decision all on his own. जिनका नाम मैंने अभी सबके बोला, क्वेमेरिफे, क्विके कोस्टास, Juan Manuel Asensi, Rodolfo Borrell, Javi Lorenz, and Albert Benitez, if all of these agree to a certain statement about Lionel Messi after seeing him in a certain amount of training sessions, or after seeing him in a certain amount of matches, only then can Lionel Messi become a FC Barcelona player. ठीक है, Messi felt calm as he made his way to his first day of training. Still a bit nauseous after the exertions of the journey, but he was there because this was what he had wanted and what he had fantasized about. He had a week at most. He had to go back to school to demonstrate what he could do with the ball. That was the easy part. Imagine never having seen the Camp Nou or the mini stadium. Leo hadn't. Arriving at the pitches adjacent to the mini, a Camp Nou in miniature, the flea hesitated before entering the dressing rooms. The flea usko bola karte the. Flea was his nickname. ठीक है. He felt embarrassed walking in by himself. His shyness, no, he's not shy. He's reserved, is extreme. His shyness को reservedness के साथ भी आप confuse कर सकते हो, but वो extreme में जाता है. ठीक है. He started to get changed outside the locker room and ended up doing so inside, away from the rest of the group, in a corner with no one nearby, standing up, tense. Imagine never having seen Lionel Messi. Like that group of players of the same age, all those coaches who had only briefly heard of him. He's so small, said the youngsters. Rodo was in the dressing room. Rodo matlab Rodolfo Borrell, jo unke coach, he was in the dressing room. Sit down, young man, he said to Leo. The kid hadn't said hello when he entered, or the noise he made when he came in did not sound like a greeting. It didn't seem like a friendly hello. मतलब इतने रिजर्व थे, मतलब वो हेलो भी उन्होंने सही से बोला नहीं. ठीक है. For Cesc, for PK, who were also getting changed, the Argentinian was just another kid coming for a trial with Barcelona. They were rarely foreigners, but occasionally one or two were. A few new boys every month. Rodo approached the group while Leo was changing in the corner. Be careful with him. He's very small. Don't break him. PK ने बोला. In that first week, Leo was isolated, very isolated. If there was a group of people talking or having a laugh, he was on the bench right at the end
very reluctant, quiet, introverted. Cesc Fabregas ने उस टाइम के बारे में बोला, so many new players came that we didn't attach any importance to it, but I remember his first day pretty perfectly well. The young players were giving him mocking looks. Messi was bandaging his ankles. PK ne bola, he was very short. He hardly said a word, and no one could have imagined what was going to happen. He measured 1 meter and 48 centimeters, 4 foot 10 and a quarter inch. That was his height. That was Messi height. 4 foot 10 and a quarter inch. तो अब तक ये मतलब अभी इतना मैंने लंबा पढ़ा, इसको अगर अनुवाद करूंगा हिंदी में, बेसिक ही है कि उस टाइम पे बार्सिलोना स्पेन के बाहर के लोगों को उतना ट्रायल के लिए लेते नहीं थे, ठीक है। स्पेन के बाहर के लोग एक दो भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए जब मेसी आया तो इतना मतलब ऑप्टिमिज्म था नहीं उसके बारे में कि मतलब ही वुड किल इट इन द स्पेनिश सिनेरियो, बट ही डिड, ठीक है। एंड आप जब इसकी अर्ली बिगनिंग्स भी देख रहे हैं, जो मैंने अभी 2-3 बार बोली, 4 फुट 10 एंड क्वार्टर इंचेस, दैट वाज हिज हाइट। तो उस टाइम पे बस ये लोग को बोला जा रहा था, पीके और सेस फैब्रिका से बोला जा रहा था कि भाई उसको तोड़ना मत, बच्चा है, तोड़ना मत, सिंपल चीज। तो या he measured 1 meter and 48 centimeters, 4 foot 10 and a quarter inches. Cesc Fabregas ne bola कि he had longish hair and spoke soft, quite Argentinian, so you could hardly hear him. In fact, he hardly spoke at all. He was a noodle. We thought this bloke is a waste of space. Cesc Fabregas said this. Okay. He was a noodle. We thought this bloke is a waste of space. All right. That was the general consensus. जो लिखा है. One of Borrell's assistants was worried. He saw how he was putting in bandages and asked him if he was injured. No, it's an Argentinian custom to prevent sprains. Leo said nothing. ठीक है, तो बैंडेजेस वो डाल रहे थे अर्जेंटीनियन कस्टम की वजह से, बट उसको पूछा गया तो ये चीज और किसी ने बोली कि अर्जेंटीनियन कस्टम है ये, इसलिए डाल रहा है. लियो सेड नथिंग. ठीक है. Jokes kept coming from the group of 12 and 13-year-olds. The bloke's a midget. Messi ran onto the pitch next to PK, who looked twice his size. Leo came up to his waist. Jorge was in the stands and heard what was being said. He's very small. He's too small. The group began to warm up, always with the ball. Firstly, it was all about controlling the ball. 1 touch, 2, 3, 10, 11, 12. He's not dropping the ball, said one of the spectators. 20, 21. Abhi Cesc Fabregas bol rahe hain about that incident. When he started to touch the ball, we saw that he was different from the rest of the boys who came for trials. Back to third person. Gradually, Rodolfo Borrell set up some one-on-ones and shots on goal. Rodolfo Borrell, again, reminding you guys, his first training guy, his first trainer, he's training him right now. Gradually, Rodolfo Borrell set up some one-on-ones and shots on goal. And when Leo got it, problems. Cesc Fabregas वापस उस बारे में बोलते हुए, first, he made me look like a complete fool and stuck it in. And as a young player, I had a special talent in defensive 1v1 situations. Now I had lost it. I used to steal the ball with ease. I don't know how I did it. Anyway, he made me look so stupid, you wouldn't believe it. Okay, the first time you're not expecting it. You were a bit too relaxed. But he did it to me again and again. And you can very much understand कि Cesc Fabregas बहुत embarrassed होते हुए वो इंसिडेंट से, बोलते हुए कि भाई मतलब बार बार मुझको ये चीज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, कि बार बार मुझको तो मतलब एम्बैरेस कर रहा था ये, ठीक है, मेरे साथ बार बार ये खेल रहा था. मैं जो चीज के लिए मैं जाना चाहता हूँ वो चीज को मैं अच्छे से कर ही नहीं पा रहा था. डिफेंसिव 1v1 सिचुएशंस को मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा था बिकॉज लियोनेल मेसी वाज दैट गुड. So, I mean, that was what was happening in the first game that they played together. Messi was dazzling with his dribbling, his finishing, his consistency. The youngsters entertained themselves watching the new boys' moves. He had won the group's respect. From that moment on, anyone who called him the midget did so with admiration, even affection. From the stands, you could hear, "Oh wow, this is something else." Leo traveled to the mini and the pitches adjacent to it by underground from the Plaza España. 2 मिनट में एक मॉड बना देता हूँ किसी को.
ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मैं किसी को मॉड बना लेता हूँ, ठीक है, एंड देन वील कंटिन्यू दिस। 2 मिनट, 12 वाले पेज पे हैं। कुछ अगर क्या बोलते हैं, कोई अगर डाउट हो, 58 पीपल वॉचिंग, 58 पीपल, प्लीज डू नॉट forget to like this stream also, and subscribe to my channel as well for more such content, ठीक है, तो थोड़ा और मुझे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है, तो जरूर करिएगा। सार्थक बूम, तुमको तो किया है भाई, तुमको तो डेफिनेटली मॉड बनाए। एंड टू ऑल ऑफ द पीपल भाई, प्लीज क्या बोलते हैं यार, थोड़ा सा मतलब बताओ कैसा लग रहा है स्ट्रीम, पहली बार कर रहे हैं भाई ये स्ट्रीम, पता है ना, पहली बार कर रहे हैं ये स्ट्रीम, बताओ कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई जम के भाई शेयर वेयर करो, कि ऐसा स्ट्रीम आपको ऐसा स्ट्रीम शायद आपको कभी अपने यूट्यूब वर्स पे शायद मिलने को रहेगा। आई डोंट थिंक सो लॉट ऑफ पीपल विल डू दिस। तो ये पहली बार मैं चीज़ ये कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कैसा लग रहा है, कुछ कैसे ही करके बताइए, कुछ भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑलवेज वेलकम। बढ़िया फ्लो बना था, माइंड में इमेजिन कर रहा था मैं गणेश बोलते हुए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी गुप्ता, हाँ, थैंक्स थैंक्स ब्रो, थैंक यू। Satvik, one can clearly understand with sex words how proud he is with the words in the book for what Messi did to him, how much he loves and respects him. Absolutely, absolutely. Bye sir, tuition time. Lucky Reds, bye 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 bye. Tuition time तेरा हो गया. Beautiful. I am continuing this stream. Give me just 2 minutes. Actually बहुत सारे हो गए यार, mods बहुत सारे हो गए, ठीक है, just give me 2 minutes. I'll just try to make somebody a mod. If not next time के लिए कर लेंगे यार, next time के लिए कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब तक तो बहुत मेरे रेगुलर मॉड्स भी अभी भी हैं ही, ठीक है, तो जो रेगुलर मॉड्स, जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप, ये सब कुछ कुछ अजीब अजीब थोड़े स्पैम वैम मैसेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको प्लीज़ देखते रहिएगा, ठीक है। और जो मॉड्स के लिए पूछ रहे हैं कि आप मॉड्स हमको बना दीजिए एंड ऑल, बात के स्ट्रीम के लिए देखेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक नहीं लेते इतना ज्यादा, ठीक है, एक मस्त सा फ्लो चल रहा है, बस फ्लो फ्लो रखते हैं, ठीक है, प्लीज प्लीज फ्लो फ्लो रखते हैं थोड़ा, ठीक है। सो या ओके, लेट्स डू दिस। ऑलराइट, Leo traveled to the Mini and the pitches adjacent to it by underground from the Plaza España. 4 stops on the Green Line to lay courts. As there wasn't training every day with his father and one of Jorge's on Minguela's colleagues, they passed the time strolling beside the port with an occasional visit to a museum. Although he didn't spend a lot of time in them, they didn't make a great impression on the kid. Not a fan of museums. Leo was never a fan of museums. Okay. The tourist bus took them to the Sagrada Familia, to the port, the zoo. He would tour the whole city. He would tour the old city. Sorry, my bad. He would tour the old city. Tuesday was a free day. Monday, Wednesday, and Thursday, he was part of the group and joined them in the drills on the clay court. So Tuesday उनका मतलब खाली का दिन था, और मंडे वेडनेसडे थर्सडे को वो ड्रिल्स करते थे, ठीक है। फ्राइडे दे वुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन टैक्टिक्स एंड ही टुक अ लेस एक्टिव रोल। तो टैक्टिकल डिस्कशन से मोस्टली होते थे फ्राइडे की ड्रिल्स, पर लियो मेसी उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे। द वीकेंड वाज आल्सो फ्री फॉर हिम। Naturally, he couldn't play official games yet. It was still sunny in September, the heat less fierce than in August, and better for walking at any time of the day. So the Argentinian group would travel to Sitges. Sitges is a place, Sitges, spending mornings on the beach, and took in a football match, his first visit to the Camp Nou. ठीक है, September में first visit to the Camp Nou. The first Saturday of his stay, he saw Barcelona play there. The opponents, Racing Santander. Racing Santander के against पहला game, as a kid, he saw Barcelona का first game against Racing Santander, and Patrick Kluivert scored a brace. Mark Overmars the third. Mark Overmars must एक winger थे भाई. If anyone remembers Mark Overmars, give a holler in the comment section. A lovely traditional winger. Loved that player. ठीक है. Even Patrick Kluivert, amazing striker. I think a very lethal goal scorer as well.
So Patrick Kluivert scored a brace in that game that Lionel Messi watched for the first time, Barca ka game, and Marc Overmars scored the third. The men of Laurent Ferrer, not the most popular of Barcelona coaches, won 3-1. Leo took a photo from the stands. The stadium was enormous, but the crowd made little noise. They wanted to go to the Barcelona Milan Group Stage Champions League match on 26th September. They couldn't get tickets. The Italians won 2-0. The rest of the time, Leo was never far away from a ball. They played head tennis in the hotel bedroom, and he would take the ball out onto the terrace to weave past imaginary opponents, to play kippy uppy, to caress it. Television filled the remaining gaps. So, जब मेसी थोड़ा मतलब फुटबॉल से दूर रहते थे, तो उस टाइम पे वो ऐसा भी नहीं था कि वो जो अपने से जो काम करते वो भी मतलब फुटबॉल से मतलब दूर होके कुछ काम करते थे, ऐसा नहीं था। वो हेड टेनिस खेलते थे होटल बेडरूम में, एंड वो बॉल को टेरेस पे लेके जाके फिर वो मस्त से ड्रिबलिंग ट्राई करते थे, वीविंग पास इमेजिनरी ओपोनेंट्स ट्राई करते थे कि भाई गेटाफे वाला गोल मैं वापस ट्राई करूं। ठीक है, मतलब गेटाफे के गोल की प्रिपरेशन वो बच्चे के टाइम से वो शुरू उन्होंने कर दी थी। तो वो सब वो फुटबॉल के साथ वो अटैच्ड ऑफ द क्या बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी हुआ करते थे। तो वो चीज थी मेसी के साथ। Lionel did not say much. He wasn't timid so much as introverted, charming to any adults who approached him, monosyllabic to his teammates in those first days. Monosyllabic का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा बात नहीं करते थे। ठीक है, मतलब आपने अगर एक क्वेश्चन उनको पूछा तो मिनिमल वर्ड्स में वो क्वेश्चन का आंसर करते थे। ठीक है, तो वो चीज वो अपनी टीममेट्स के साथ अर्ली डेज में किया करते थे। Off the pitch, there was a lot of killing time waiting for the return from Sydney of Charlie Rexach because no one would give the nod to confirm his signing. ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, चार्ली रेक्सैक सिडनी गए थे, जैसे मैंने बोला कि सिडनी गेम्स में गए थे, वो सैमुअल एटो को देखने के लिए गए थे, और एक दो जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो है चार्ली रेक्सैक, बिकॉज फर्स्ट टीम के लिए वो ज्यादा काम किया करते थे, तो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स जो गए थे सिडनी गेम्स में खेलने के लिए, उधर चार्ली रेक्सैक थे। तो सब अभी वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चार्ली रेक्सैक आ जाएंगे बार्सिलोना, तभी कुछ कॉन्फर्मेशन होगी लियो मेसी की साइनिंग की। ठीक है, तो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर चार्ली रेक्सैक टू कम बैक। ठीक है, on the pitch, he was something else. Next to his new teammates, he didn't seem like that timid boy who the day before was quietly eating a pizza or a hamburger or a plate of pasta or just walking, lost in his own thoughts. Lionel Messi was not exactly a very social guy. ठीक है, मतलब वो खाना भी मतलब पूरा ये बोला ना, पिज्जा, हैमबर्गर, प्लेट ऑफ पास्ता, प्रॉपर मतलब बच्चों का खाना, इट्स ऑलमोस्ट इन दैट जोन। ठीक है, or he was just walking, lost in his own thoughts. That's what he used to do. When he was alone in his room or just before going to sleep, by the light of his bedside lamp, he would take out a thick pen syringe and inject whatever leg needed injecting that day. जो hormonal injections के बारे में बात की थी, this is what he used to do. And the same routine the following day: touches of the ball, a visit to the city, pizza, training in the afternoon, and injection. Same routine. Leo, do what you know. Get the ball. Don't pass to anyone and head for goal. Jorge Messi's advice was about exploiting the very talents that had brought him to Barcelona, but also a natural reaction to Borrell's insistence as a Barcelona trainer that they should play one and two touch football. We have to come with our own game, show you as you are. If he knew one thing, it was how to dribble. While the rest of the group passed the ball around and obediently kept to their space, Messi offered something else. So पहले मैं गणेश का क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा, खुद को इंजेक्शन देते थे क्या? गणेश, yes, this was a thing that Lionel Messi used to do. ठीक है, और वही इंजेक्शंस के लिए पैसे इकट्ठा करना होता था, बिकॉज दोज इंजेक्शंस वर प्रीटी कॉस्टली। सो इसीलिए वो बार्सिलोना ने अग्री किया था कि वो इंजेक्शंस के पैसे वो देंगे, तो इसीलिए वो बार्सिलोना भी आया था। एंड अभी अगर मैं क्या बोलते हैं, अभी अगर मैं इसका क्या मैं ये पैराग्राफ का समरी करूं, ठीक है,
तो ये पैराग्राफ का मैं जब समरी करूंगा कि हॉर्हे मेसी ने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर दिया था लियोनेल मेसी के स्पेशलिटी को, कि भाई यू आर ग्रेट एट ड्रिबलिंग, just dribble and go for, just dribble, the ball will stick to your feet, just dribble, trust your own strengths. I think this is a lesson for life as well, trust your own strengths. ठीक है, as simple as that. ठीक है, for every player out there as well, for every football player as well, trust your own strengths. I know football has evolved since that time थोड़े से, मतलब आपको टीम के लिए भी जरूरी है खेलना, बट आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स द ओपोनेंट विल क्लोज यू आउट, एंड व्हेन द ओपोनेंट क्लोजेस यू आउट, इंडिविजुअल ब्रिलियंस गेट्स यू आउट ऑफ द मेस. तो इसीलिए ये सब चीजें लियोनेल मेसी को शुरुआत से बहुत ट्राई करते थे लोग समझाने को, एटलीस्ट होर्हे मेसी ट्राई करते थे समझाने को कि डू व्हाट यू नो बेस्ट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, इसीलिए while the rest of the group passed the ball around and obediently का मतलब ये होता है कि मतलब without any argument. ठीक है, कि शांति से obediently kept to that space, Messi offered something else. And so it went on, day after day. He trained with the junior A group, and at the end of training would play a game with the junior B side. His father would watch him from the stands or leaning on the fence that separated the two pitches. One day, he scored 5 goals and hit the post twice. Fuck my life, bhai. Shit. 5 goals and hit the post twice. Bacha. He played for himself, but did so with such conviction, with such talent, that it wasn't worth trying to correct him. One touch, Leo, shouted Rodo, but he was really reminding the rest of the group. One, or at the most, 2 touches. It didn't matter what he was told. Leo played as he had always done, with little touches, with speed, with flow, dribbling right and left. A ball player more than a footballer, and there is a huge difference. Absolutely, there's a huge difference between a ball player and a footballer. There's a huge difference. A ball player is definitely the one who absolutely sticks to the ball no matter what. Okay? And a footballer is a one who likes to look at the bigger picture as well. But I think Messi was a ball player, definitely a ball player in his early days. Another day, he scored 6 goals. Jorge wasn't sure if the pressure was good or bad for his son. At some point, a friend of Minguella suggested to him that he should reward Leo's goals with presents. If there was a rucksack that he liked, some football boots, he would be given them in exchange for goals, let's say 5. His father wasn't sure it was going to work and preferred not to interfere, but the challenge motivated Leo. He scored 4, but one shot crashed against the woodwork and appeared to go in. No, no, it didn't go in, he was told. Leo went crazy. It did go in. There was a complete set of sportswear at stake. A heated discussion followed. He eventually got the present. After the first week, the former Barcelona player Migueli, who was working in the youth ranks of the club, came round and asked, "Who's the boy who has come from Argentina for a trial?" Leo, who was training, was pointed out to him. The little fella there, the one in the middle of the pitch. He looked at him. He had a ball on top of his left foot. He was awaiting instructions. I don't have to see him play football. Just by the way he's standing, you can see he's a good footballer. Just like that. Nothing more. बार्सिलोना प्लेयर, फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर मिगुएली यूथ रैंक्स पे काम करते थे. उन्होंने बोला उनको पता ही नहीं था कि मेसी जैसे कोई प्लेयर है. ठीक है, उनको बस पता लगा था कि कोई यंग प्लेयर आया है. तो जब उन्होंने बस देखा कि मेसी वो लेफ्ट फुट पे अपना बॉल को लेके खड़े हैं. ठीक है, लेफ्ट फुट पे मतलब ऑन टॉप ऑफ हिज लेफ्ट फुट बॉल को लेके खड़े हैं. ठीक है, और बस वेट करे कि बाद में इंस्ट्रक्शन आएगा. इमेजिन दैट विजुअल. ठीक है, वो विजुअल देखा ये फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर, उन्होंने बोला मुझे इसको फुटबॉल देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे समझ में आ गया ये तो ही इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक प्लेयर. ठीक है, तो ये चीज थी. He had hit the nail on the head. It was late, around 8 o'clock in the evening. Migueli continued watching the session. What are these people doing that they haven't signed him yet? This boy is the closest thing I've seen to Maradona. And he should know. Migueli, a former centre back, played with Diego at Barcelona. This man played with Diego Maradona at Barcelona, boys.
and he made this statement कि I don't have to watch him play. वो ऐसे खड़ा है and I understand that he loves football. He is going to be a great player. This player played with Diego Maradona at Barcelona. Crazy. But the days are passing and no one was saying anything to Jorge, nor to Leo. They were waiting for a decision from Rife and the return of Rexac, who was still away. But they had to get back to Argentina. They had already lost too many school days. Don't forget that Messi was still in school. Don't forget that Messi was still in school. So उसका स्कूल अभी भी अर्जेंटीना में था. ऑब्वियसली स्कूल से छुट्टी थोड़ी देर के लिए मिली होगी बिकॉज ऑफ बार्सिलोना, बट कितनी छुट्टी मिल पाएगी भाई. ठीक है, like when you are a kid you still need to go through school. So that was the worry that they were having in their head. They had to get back to Argentina. They had already lost too many school days. Jorge insisted that they could not be away for more than a week. It was now the 8th day. मोर देन वीक हो गया था. होरे मैसी बोल रहे थे कि भाई वीक से ज्यादा नहीं हो सकता, बट ऑलरेडी 8वां दिन हो गया था बार्सिलोना में. ठीक है, एंड कोई न्यूज नहीं आई थी. एज द नेक्स्ट स्टेटमेंट puts it, something wasn't right. There is one thing in the Messi mythology that has been misinterpreted. It said that some of the Barcelona coaches were not convinced of his talent, uncertain about signing him, would say one thing to his face and another behind his back. Just like a lot of people. कुछ सामने बोलेंगे कुछ और पीठ के पीछे कुछ अलग बोलेंगे. Their names are mentioned Soto Wake because some of them are still at the club. Soto Wake का मतलब there is absolutely no legit meaning that would provide मतलब कुछ a lot of meaning to my book reading, ठीक है, और to the story. Basically इसका मतलब ये हुआ इनके नाम नहीं ले सकते. कुछ कुछ जो कोचेस हैं जो अनसर्टेन थे, इनके नाम शायद हम नहीं ले सकते क्योंकि क्योंकि वो कुछ कुछ कोचेस अभी भी इधर ही काम कर रहे हैं, अभी भी इधर ही बार्सिलोना में काम कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी पर्सपेक्टिव से नाम नहीं ले सकते. ठीक है. Some of them are still at the club, while others have developed successful careers away from the camp now that might be damaged if this was to be revealed. There was a typical guy who would say, Rexac's interpretation of the situation further confuses the issue. अभी Rexac का interpretation क्या था ये situation का कि भाई मेसी के ये जो limbo situation का क्या था. Rexac के comments ये रहे. There was your typical guy who would say, well, he's too small, the sort of bloke that should play indoor football, a table football player, the usual stuff. That was what people were talking about. But in truth, the trial was going well, more than well. It was also decisive. Just 5 minutes at one of the training sessions was enough to show his talent. From a coaching point of view, Charlie Rexac's appearance at pitch 2 or 3, that's where these Barca kids used to practice, pitch 2 or 3, if you remember correctly in this book reading session. पहले भी मैंने बोली. From a coaching point of view, Charlie Rexac's appearance at pitch 2 or 3 to watch Messi was hardly necessary either. He had no need to make the casting vote. His only need was for an approval. ठीक है, but in no need उसको वोट करने की जरूरत थी. ठीक है, in amidst the other coaches who were involved. ठीक है, रुको. लोन वुल्फ बोल रहे हैं अभी गुप्ता कुछ ज्यादा नहीं होगा इधर. रोनाल्डो वर्सेस मेसी वाला डिबेट मत लेके आ जाओ प्लीज. बट अभी गुप्ता मेसी वाज सेंट बाय गॉड जस्ट टू प्ले फुटबॉल. इन मतलब ऐसे जोन में तो बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे फुटबॉलर्स ऐसे जोन में. ठीक है, बट यस डेफिनेटली मेसीज अर्ली साइंस वर वेरी क्या बोलते हैं सरियल. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. But in the end, Rexac had to be convened and the Messis had to delay their return to Argentina. The first team director should not have been involved in such decisions, but no one, it seemed, was prepared to take responsibility for the possible failure or even, in the best case scenario, the success of signing up a 13-year-old Argentinian boy. इसका मतलब ये हुआ कि नो वन वॉज मतलब कोई भी ऐसा रिस्क लेने के स्टेज पे नहीं था, क्योंकि 13 साल का बच्चा है सामने, आपके सामने 13 साल का बच्चा है. ठीक है, ऑल्दो ह्यूजली टैलेंटेड. आपने सुना है उसके बारे में कि ये 13 साल का बच्चा इज
हैज अ क्रेजी अमाउंट ऑफ टैलेंट, बट उसको अडाप्ट भी तो करना है, बार्सिलोना के साथ अडाप्ट भी तो करना है। क्या आपके दिमाग में, क्या आप अपने आप को उस टाइम पे उतना उतना रिस्क टेकर सोचोगे कि भाई हम मेरा ठप्पा लगेगा अप्रूवल का इस पे, मेरा ठप्पा लगेगा अप्रूवल। आई डोंट केयर वेदर ही इज जस्ट 13 years old, ही कैन डू बिग थिंग्स। ठीक है, विल यू बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द ठप्पा? ठीक है, वही चीज ट्राई करते एक्सप्लेन करने को इधर कि बहुत सारे लोगों ने मतलब थोड़ा मतलब पीछे कर लिया स्टेप, क्योंकि उनको लगा नहीं कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पॉसिबल फेलियर और इवन सक्सेस ऑफ दिस 13-year-old अर्जेंटीनियन बॉय। ठीक है, तो हाउ ऑन अर्थ डू यू एक्सप्लेन द डाउट्स? To begin with, the involvement of such club heavyweights, Rexach in spirit at least, Minguela, Anton Pereira, Reefer, ये सब club heavyweights की involvement in the potential transfer of a child footballer was proof that this was something special, something unusual. Leo was protected from above, and with so many important names on the case, something was definitely going on. Or at least that's how it was seen by those looking on from the sidelines. The matter became the talk of the town during those weeks and created great expectations. Rodolfo Borrell's colleagues spent whatever time they could taking a look at him. The debate was not so much about his talent, but how to harness his individuality to the club's own established and collective game plan. Same चीज, लास्ट लाइन समराइजिंग द होल पैराग्राफ। ठीक है, टैलेंट के बारे में तो डिबेट ही नहीं था, बट वो जो इंडिविजुअलिटी बोली थी ना मैं कि भाई यू जस्ट पिक अप द बॉल एंड जस्ट ड्रिबल पास्ट। ठीक है, दैट्स अ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो दैट्स एन इंडिविजुअलिटी। तो वो इंडिविजुअलिटी तुम कलेक्टिव को इन्फ्लुएंस करने में तुम कितने कितने सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो वो इंडिविजुअलिटी, वो एस्पेक्ट पे जज करना था लियोनेल मेसी को, बार्सिलोना की फुल हायरार्की को। ठीक है, कि क्या ये इंडिविजुअलिटी कलेक्टिव गेम प्लान के लिए सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं। तो यस, but this heavyweight interest was not the oddest thing. In 2000, the very idea of bringing over a youngster from Argentina seemed like lunacy. It simply wasn't done. Leo's talents were obvious for all to see. An anonymous source at the club who saw him during those 2 weeks described Leo as Las Ostia en Patinete. That is Argentinian, Las Ostia en Patinete, जिसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, which means the dog's bollocks, but translates more or less as something that moves like lightning. ठीक है, तो although its literal translation dog's bollocks hai, but I think the person who gave him who described him as Las Ostia en Patinete, these 4 Argentinian words, वो शायद इसका ट्रांसलेशन यही सोच रहा होगा कि ये होगा कि समथिंग दैट मूव्स लाइक लाइटनिंग। ठीक है, तो वैसा ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, तो ही थॉट दैट he wanted to describe Messi as something that moves like lightning. ठीक है, he did then, that source continues, the same as he does now, but in miniature. Okay. It would be an injustice to history to suggest that the reason they might not have wanted him was because he was too small. There was something else. These days, it is considered quite normal to bring a youngster, whatever age, to a club from anywhere in the world. And the battles to sign children as young as 8 years old are well documented. But in 2000, they were breaking new ground. 5 years earlier, the signing of an infantile अगर आपको याद है guys, तो infantile FC, that was Leo Messi's first club at Barcelona. ठीक है, फर्स्ट साइड एट बार्सिलोना, इन्फेंटाइल एफसी, सेस्क फैब्रिगास, जेरार्ड पीके, विक्टर वास्केज, जैसे मैंने बोला था। तो इधर जो चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ, 5 साल पहले signing of an infantile from Mataro Granollers, Sant Pedor. Mataro Granollers, Sant Pedor, जगह है स्पेन में, which is less than an hour from Barcelona, was considered to be bringing them a long way. ठीक है, the cadets came from all over Spain, and now they were talking about taking on a young Argentinian lad who had arrived aged
just 13. Hold on a minute. Many studies have been carried out on the subject, and at that time, the general idea was that no matter how good a player might be at that age, no one could guarantee that he would make it into the first team or even end up as a professional footballer. To take him away from his family, his country, his friends, all of that, to put him in a situation where there are no guarantees. Of course, now he has become the best player in the world, and it has become a wonderful story. But so says another witness to that most unusual of arrivals. ये था एक witness का कहना कि मतलब उसको अपने होमलैंड से लेके आना, उसको अपने फैमिली से दूर रखना, उसको अपने कंट्री से दूर रखना, उसको अपने फ्रेंड से दूर रखना एट एन एज ऑफ 13, एट एन एज ऑफ 13 इज अ वेरी रिस्की थिंग टू डू. ठीक है. Of course, now he has become the best player, but doing that at that particular point of time was a very very risky thing to do. Because obviously अभी currently हम move हो गए, ठीक है, अभी दुनिया थोड़ी और move हो गई है जहाँ पे बच्चे बहुत readily मतलब they are changing countries in search of boosting their career. But at that point in time it didn't usually happen. As I said, बार्सिलोना में mostly दो और तीन लोग, शायद दो तीन prospects ही आते थे from outside of Spain to be good enough for Barcelona. Messi was one of these prospects from Argentina. So I think nobody expected him to do great. And considering the risks involved in such a young player making a move to another country, nobody was actually expecting him to do great, but Messi proved them all wrong. It would not be the youth football coaches who would decide his future, but they talked among themselves about the possible dangers of the situation. The club had been reticent even about signing players from distant parts of Spain, taking them from their home environment, their school. The normal thing, the logical thing, it was said, was that Leo should be treated the same. Oriol taught one of the most renowned scouts, the leader and ideologist of the Barcelona Academy, has always claimed that the preferred age for a player to join La Masia is 15 or 16. That's how things were in 2000. 15 or 16 age के मतलब that was the ideal age. 15 or 16 was the ideal age to join La Masia. 13 years was just unreal. ठीक है. So that is what. So, was it, as legend has it, lack of awareness among the coaches or a sensible reluctance on their part because they knew the effect that uprooting the boy would have on his family? I will repeat the statement again because this is a good question. So, was it lack of awareness among the coaches or a sensible reluctance on their part because they knew the effect that uprooting the boy would have on his family? So, वो क्या कोचेस को उस टाइम पे पता नहीं था कि ये सब इफेक्ट्स होंगी उनके मेसी के ऊपर इफेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हिम ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री एट सच यंग एज. ये सब डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब थोड़े हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं मेसी की साइकी पे. क्या कोचेस को उसके बारे में आइडिया नहीं था या कोच उसको इग्नोर करते थे क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि सामने एक बहुत बढ़िया प्लेयर है. ठीक है. तो वो चीज़ हम खाली इसकी फुटबॉलिंग एस्पेक्ट को देखेंगे, इसकी साइक को करंटली नहीं देखेंगे. ठीक है. तो दोनों में से आपका स्टैंड करते इफ यू वर अ कोच करंटली. ठीक है. आपके ऊपर मैं अभी दूंगा. वैसे भी अभी आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 3 पेजेस लेफ्ट हियर. ठीक है. तो आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा. ठीक है. करंटली इफ यू वर एट अ सर्टेन इफ यू वर एट द कोचेस पोजीशन. ठीक है. आप कोच के पोजीशन पे हो. ठीक है. बार्सिलोना कोच के पोजीशन पे हो. नाउ आप जानते हो कि जो ला मासिया के कोच के पोजीशन पे हो, ला मासिया 15 से 16 एज के बच्चे ही आ रहे हैं. ठीक है. 15 से 16 एज के बच्चों का आपने एक क्या बोलते हैं एक लेवल सेट किया है कि दैट्स द लिमिट टू विच वी कैन गो टू. ठीक है. उतने से नीचे लेके नहीं आ सकते. बट 13 साल का एक मस्सा आपके सामने एक बच्चा आ गया. ठीक है. 13 साल का बच्चा आपके सामने मस्सा आ गया. ठीक है. And he's come from South America, bro. Different continent altogether. ठीक है. Different culture, absolutely different culture. Let's say इंडिया से आ गया है. ठीक है. इंडिया से 13 साल का बच्चा आ गया. ठीक है. आप स्पेन के बार्सिलोना में हो, 13 साल का इंडिया का बच्चा आ गया. ठीक है. इंडिया का बच्चा आके आपको बोल रहा है आपने बोला कि ठीक है मेडिकल हार्मोनल इंजेक्शन वो सब का पैसा पे करना, तुम्हारे डैड को भी जॉब देंगे, ये सब दे देंगे.
उसके बाद आप उसको असेस कैसे करते हो? आप उसको असेस खाली फुटबॉलिंग स्टैंड पॉइंट से करते हो, या आप उसको असेस ये भी करते हो कि यार ये इतना थोड़ा जल्दी नहीं आ गया हमारे पास, थोड़ा जल्दी, मतलब इसको मतलब क्या बोलते हैं, हमारा कल्चर का ब्लास्टिंग, थोड़ा ब्लास्ट नहीं मिलेगा हमारे कल्चर का, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाउ इजली ही हैज बीन एक्सपोज्ड टू बार्सिलोना का फुटबॉलिंग कल्चर। तो ये सब क्या आप सोचोगे? तो आप कौन से साइड पे रहोगे? क्या आप ये फुटबॉलिंग साइड पे रहोगे, या एक ओवरऑल साइड पे रहोगे आप, कि ओवरऑल साइड से आप थोड़ा डरोगे इस मूव के बारे में, या फुटबॉलिंग साइड से आप सोचोगे कि चलो ठीक है, नहीं ये 18 साल का बच्चा, आई विल सिलेक्ट हिम? तो आप ऐसा करोगे क्या? दो साइड है आप, तो आप कौन से साइड पे रहोगे, प्लीज बताना। अभी गुप्ता बोल रहे हैं, पर गुरुजी पीके एंड बाकी प्लेयर्स भी तो 13-14 के होंगे ना तब। बट पीके एंड बाकी प्लेयर्स भाई 13-14 के नहीं थे। जब मेसी आया था, पीके एंड सेस फैब्रिगास वर ऑलरेडी रेगुलर्स इन दैट इन्फेंटाइल्स वाला स्क्वाड, ठीक है, तो वर ऑलरेडी रेगुलर्स इन दैट। तो मेसी वा, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो दैट होल्ड्स ट्रू। पर वो स्पैनिश थे ना, वो अर्जेंटीना से आया था अकेला, एग्जैक्टली वो भी एक चीज है, ठीक है। तो ये चीज हुई। Old school push just on footballing merit and make sure as a coach that he's surrounded by good people and everyone makes him feel at home. That is true. I think that's what Barcelona tried to do. And with Cesc Fabregas and Gerard Piqué, Cesc Fabregas ke sath he started forming a very good friendship. Gerard Piqué leadership qualities were very much evident there. So I think this friendship that he formed with these two people was very pivotal इन हिज बार्सिलोना जर्नी, जो हम बाद में जो हम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सात्विक बोले, इन माय ओपिनियन ओवरऑल शुड बी कंसिडर्ड दैट किड शुड सेटल वेल देयर एज वेल, लाइक वी सॉ मेसी लास्ट ईयर इन लीग वन, ही टुक टाइम टू सेटल देयर एंड लुक एट हिम नाउ। हाँ, ये भी सही बात है, कंसीडरिंग रीसेंट ट्रेंड, ये भी सही बात बोल रहे हो। चलो, मूविंग ऑन, लेट्स फिनिश दिस चैप्टर गाइस, एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लाइव, ठीक है। लेट्स फिनिश दिस चैप्टर राइट नाउ, ठीक है। सो ऑलराइट, लेट्स डू दिस। ओके, कहाँ पे थे? Okay. Many studies have been carried out on the subject, and at that time, the general idea was that no matter how good a player might be at that age, no one could guarantee that he would make it into the first team or even end up as a professional footballer. To take him away from his family, his country, his friends, all of that, to put him in a situation where there are no guarantees. Of course, now he has become the best player in the world and it has become a wonderful story. But so says another witness to that most unusual of arrivals. It would not be the youth football coaches who would decide his future. Huh. It would not be the youth football coaches who would decide his future, but they talked among themselves about the possible dangers of the situation. The club had been reticent even about signing players from distant parts of Spain, taking them from their home environment, their school. The normal thing, the logical thing, it was said, was that Leo should be treated the same. Oriel Tot, one of the most renowned scouts, the leader and ideologist of the Barcelona Academy, has always claimed that the preferred age for a player to join La Masia is 15 or 16. That's how things were in 2000. So was it, as legend has it, lack of awareness among the coaches or a sensible reluctance on their part because they knew the effect that uprooting the boy would have on his family? For example, now giving an example, I read this again so that thoda और clarity आ पाए लोगों के पास. For example, Andres Iniesta, as a youngster, 12 years old, 1996, he took part in the national tournament of Brunet with teams from the Spanish First Division La Liga. As always happens in tournaments of importance, the clubs sent various scouts. The best players on this occasion were first Iniesta from Albacete. Iniesta Albacete के लिए खेलते थे उस टाइम पे, ठीक है? And second, Jorge Troitero from Merida. At that time, both La Liga clubs, Merida, Albacete, both were La Liga clubs. And पहली बार जब क्या बोलते हैं, पहली बार जब एंड्रेस इनिएस्टा नेशनल टूर्नामेंट ऑफ ब्रूनेट 12 साल की उम्र में नेशनल टूर्नामेंट ऑफ ब्रूनेट के लिए खेले, तो उसमें स्काउट्स ने उनको पसंद किया
इनिएस्टा अल्बासेटे के लिए खेलते थे, ठीक है। स्काउट्स ने उनको पसंद किया, और एक प्लेयर को भी पसंद किया जो थे हॉर्हे ट्रॉयटेरो। हॉर्हे ट्रॉयटेरो मेरीडा से थे, उनको भी स्काउट्स ने पसंद किया, ठीक है। 2 लोगों को स्काउट्स ने पसंद किया ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। सचिन यादव ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बुक इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू, मैं समराइज कर रहा हूँ जो जो पार्ट्स को रीड किया, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो पार्ट्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ समराइज करने को हिंदी में भी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा गुस्ताखी माफ करें, ठीक है। बट या कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, Messi scored his first goal against Albacete, by the way. Yes, very interesting fact. Thank you, old school purist. Um, there was no prize for second place, but the debate centered around which one of the two was better. ठीक है, बहुत क्लियरली स्काउट्स जब दोनों को पसंद किया तो कौन सा बंदा ज्यादा बेटर था, ठीक है। वॉज इट होर्हे ट्रॉयटेरो, ट्रॉयटेरो TROITEIRO, अगर आपको सर्च करना है गूगल पे, या इनिएस्टा, दोनों में से कौन बेटर खेला वो टूर्नामेंट में, ठीक है। तो ये डिबेट होता रहा। फिर Barcelona took notes, spoke with Iniesta's family, worked out the contractual details with the player before deciding that he should remain at home and that they would monitor his progress from a distance. The idea was to bring him to La Masia 2 or 3 years later when he had reached the age of cadet. Cadet का एज है 14 से 15, ठीक है। 14 से 15 साल में अगर आप पहुंचते हो वो एज को, तभी उस टाइम पे बोला जाता है कि आप बार्सिलोना के लिए, ला मासिया के लिए साइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 12 साल के थे जब इन्होंने इम्प्रेस किया था बार्सिलोना को, ये 12 साल के थे जब इन्होंने इम्प्रेस किया थे बार्सिलोना की हायरार्की को, इनिएस्टा, ठीक है। तो इसीलिए जब 12 साल के थे तो उनको साइन तो किया, बट इनको बोला गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स सब साइनमेंट के, बट बस मॉनिटर करते गए इनके प्रोग्रेस को, ताकि जब ये कैडेट एज तक पहुंच पाए, अगर उनका प्रोग्रेस वैसा ही रहता गया, 14-15 साल तक पहुंच पाए, अगर उनका प्रोग्रेस वैसा ही रहता गया तो वो उनको डेफिनेटली साइन करेंगे इनटू बार्सिलोना। अभी हॉर्हे के बारे में डेफिनेटली लोग बोले हॉर्हे वाज द गोट, ऑफ कोर्स। हॉर्हे एज फक, ऑफ कोर्स, ठीक है। ओल्ड स्कूल पुलिस और एक अच्छा चीज डालते हुए जो आपको गूगल में ही मिल जाएगा फॉर श्योर, इन्फेंटाइल, कैडेट्स, जुवेनाइल आर स्टेजेस ऑफ ला मासिया, देन कम्स बारसा बी एंड देन फर्स्ट टीम। एब्सोल्युटली, थैंक यू। इन्फेंटाइल आप बेसिकली बहुत जब छोटे रहते हैं तो इन्फेंटाइल वाले एज में आप पे, फिर कैडेट्स आता है, फिर जुवेनाइल आता है, तो वो चीज रहती है। 2 मिनट दीजिए, कोई आई थिंक कोई आया है, बट आई थिंक पापा भी है घर पे तो वो खोल सकते हैं डोर, ठीक है। तो पापा खोल देंगे डोर फॉर दिस। ओम का हटंगडी, थैंक यू गुरुजी फॉर दिस, थैंक यू। ट्रॉयटेरोस, अभी ट्रॉयटेरो के बारे में बात करें, हॉर्हे ट्रॉयटेरो द गोट compared with Iniesta. Troitero's father was not prepared to take defeat sitting down, so he set out by car from Merida in Extremadura in western Spain. That's where Merida is situated. Merida is situated in western Spain. So Troitero Merida से गए across the country to the offices of Barcelona. ठीक है. His son was going to be a footballer, no question about it. He knew that the club had positive reports about the boy, and the idea of Barcelona appealed to the family. So either they signed him now, or he would go to Madrid or to Valencia or wherever. Barcelona had told the family about the effect on the boy's schooling, the upheaval, the relocating, but his father persisted. It was his son, and he was going to get him into a big club. Barcelona, despite their initial objections, yielded to the pressure because the youngster, an extremely skillful left winger, had a lot of talent, something that he would soon show at the lower levels. We are talking about Mr. Jorge Troitero, ठीक है, जिनको अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, जो इनिएस्टा के साथ, इनिएस्टा 12 साल के थे जब उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला था, उसमें हॉर्हे ट्रॉयटेरो एंड Andres Iniesta were the 2 big players to be scouted,
ठीक है, तो हॉर्हे टॉर्टरो को ऐसे लग रहा था कि वो तो भाई बार्सिलोना के लिए खेलेंगे ही, उनके पूरे कैंप को भी लग रहा था बहुत बढ़िया स्किलफुल लेफ्ट विंगर थे, बट बार्सिलोना ने उनको भी लिम्बो में डाला था। ठीक है, पर moving forward now, but there was no boy of that age at La Masia. In fact, there was only one under the age of 16 who would be almost at par with Jorge Troitero. So, what did Barcelona do? They called Iniesta, also from La Mancha, to come to Barcelona to keep Troitero company so that he would not be lonely. Jorge Troitero was eventually thrown out of La Masia for indiscipline. Iniesta, who spent a lot of the time crying in his room in the farmhouse in which the players from outside Barcelona lived, would years later score the goal that earned Spain its first World Cup. This is what happens. This is destiny. If you think that you are too good uh, and you deserve the best and you keep working towards that, great. But if you don't keep honestly working towards that, then there's a problem. Jorge Troitero faced it. Okay, thrown out of La Masia. Iniesta scored for Spain in the World Cup. Two contrasting situations, तो आपको समझ में आएंगी. ऑल्सो और एक चीज जो इधर बहुत क्लियर है, वो थी कि बार्सिलोना के आपके ऊपर प्रेशर तो डालता टॉर्टेरो के कैंप ने, पर फिर वो जो रिप्लाई दिया ना कि चलो तुम्हारे साथ इनिएस्टा रखते हैं. ठीक है, ये जो रिप्लाई था, this reply was an almost slap on the face of Troitero because and their क्या बोलते हैं attitude, because of the fact कि आप आपने आपके साथ आपने जो एटीट्यूड वाले बंदे के साथ एक ऐसा बंदा रखा है who goes about his business quite honestly and he has amazing talent, so you know that that other guy is going to perform really well. मतलब वो honest talent is going to perform really well. He's going to outshine that guy with an attitude out there. ठीक है, तो and probably the attitude guy can learn something from the honest guy as well. So you're going to do that. You're going to do that as a business, and I think Barcelona did that really well, did that shrewdly, and इसमें Iniesta बहुत निखर के आए सामने. तो yes, I think we should have signed Jorge. He would definitely be better than Iniesta. लोग trolling करते हुए but crazy. Troitero was humbled, Abhi Gupta bolte hue. But yes. So there are fears, doubts, promises, and today also a methodology in Barcelona's famous academy. But still, there is no guarantee of success. Someone asked Leo after 8 days of training if he still thought it was a good idea to sign for Barcelona. That person was Rodo Borrell. रोडो बोरेल ने 8 दिन ट्रेनिंग की. लियोनल मेसी ने, रोडो बोरेल जो उनके पहले ट्रेनर थे बार्सिलोना के, रोडो बोरेल ने बोला कि क्या तुम अभी भी बार्सिलोना के साइन करना चाहते हो. तो लियो ने कहा कि उनको ट्रेनिंग मेथड बहुत पसंद है. ठीक है, इन रोजारियो इट वाज ऑल मच मोर फिजिकल था काफी रोजारियो में अर्जेंटीनियन फुटबॉल, एंड हियर मोस्ट द वर्क वाज डन विद द बॉल व्हिच प्लीज्ड हिम. तो ये चीज उनको बहुत पसंद है कि सब बॉल के साथ ज्यादा चीजें होती थी इधर, तो वो चीज उनको बहुत पसंद है. He was enjoying it, and he could see how massive the club was and the challenge. He wanted to stay. 10 days after the Messi's arrival at Barcelona, there was little more to see of the city. No more to know about him as a footballer. Everything was done. He had taken nearly 2 weeks off school, and that had never been part of the plan. 2 weeks off school at the age of what, 13, was kind of unexpected. So he had taken 2 weeks off school. Sub कर लिया था. There was और कुछ सिटी में देखने के लिए कुछ बाकी नहीं था. फुटबॉलर 10 दिन रह चुके हो, 10 दिन में आपको उसने सब अपने क्वालिटीज दिखा दी थी बार्सिलोना की कि व्हाट ही इज एज अ फुटबॉलर. तो ही डिडंट हैव एनीथिंग मोर टू शो देयर एज वेल. तो इट वाज क्लियर दैट एनी क्लब would have wanted Leo, but this was a unique experience for Barcelona, and no one wanted to take the risk. They had to wait for Charlie. Jorge was ready to return home. Stay one more day. Rexac will be back on Monday, he was told. The president's advisor, जो है Charlie Rexac, finally arrived from Sydney and met up with Rife. Rife, जो है Academy Barcelona के Academy के director. There were a number of issues on the table, among them the matter of the Argentinian boy.
Play him in an older group, 2 years older. I want to see how it unfolds when he plays with the bigger boys, said Rexak. बेसिकली रेक्सैक ने बोला कि भाई उसको बड़े लोगों के साथ खिलाओ, लेवल अप करो उसका, जब वो खेलेगा उसके बाद मैं अपना फाइनल स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी डालूंगा, डिसीजन बनाऊंगा. Charlie Rexak, I got involved so as to give my casting vote because if those under me had said, let's sign him, then I wouldn't have come down. The final trial was set to take place on 2nd October at 6 in the evening. Instead of the clay surface where he had played most of the time, this would take place on pitch 3. अब तक अगर आप देखते रहेंगे तो pitch 2 पे बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है, क्योंकि अब तक हम वो pitch 2 के बारे में बहुत बात करते थे. On pitch 3, the artificial surface located behind the bowling alley, facing the mini stadium. ठीक है, मिनी स्टेडियम जो काफी कैंप नाउ जैसे, मतलब एक छोटा कैंप नाउ जैसा जोन था मिनी स्टेडियम का, ठीक है, लाइक योहान क्राइफ वाला जोन बोल दीजिए, योहान क्राइफ स्टेडियम जो अभी बना है वो योहान क्राइफ स्टेडियम वाला जोन बोल दीजिए. तो वैसा था. फाइनल ट्रायल था 2 अक्टूबर को 6 इन द इवनिंग, ठीक है. The moment had come. There was no going back. The following day, Leo and Jorge were to return to Argentina. Leo, all 1 meter 48 centimeters of him, was to face youngsters 2 years older than him. Migueli came to see. Migueli is that former Barcelona player जिन्होंने देखा कि he is balancing a ball on the top of his left foot. I don't want to see him play football. I'm happy. ठीक है, ये थे वो प्लेयर. Migueli came to see him, and Rife, of course, and Kike Costas, Xavi Lorenc, Albert Benitez, all of these Barcelona coaches, and also Rodolfo Borrell, who had him in his team for the last 10 days. They sat on the substitutes bench. The game started, and Charlie Rexak still hadn't arrived. He was coming late after a lunch. Recently back from Australia, he was between time zones. So अभी अभी आया था ऑस्ट्रेलिया से, अभी तक टाइम जोन अभी तक लाइक अक्लाइमेटाइज बोलते हैं या यूज्ड टू अब तक हुए नहीं थे टाइम जोन से. तो ही जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम लंच. तो अभी तक चार्ली रेक्सैक ने लियोनेल मेसी को ट्रेनिंग में अभी तक एक भी दिन नहीं देखा था. तो अभी भी टाइम था उसके लिए. 2 minutes later, Charlie climbs up the steps leading to the pitch. अभी चार्ली रेक्सैक का वर्ड्स है. Charlie Rexak, I did the usual, walked about a bit and stopped when I saw him get the ball. Rexak comes through the door, passes the corner flag and goes behind the goal. फिर Charlie Rexak कंटिन्यू करते हुए अपना स्टेटमेंट. Charlie Rexak, he was easy to spot because he was tiny. Quite a sight, no? Messi gets the ball in the center of the pitch and starts to dribble towards whoever stands in his way. Jorge Messi बोलते हुए. Charlie came in and Leo made a move. फिर Charlie Rexak बोलते हुए. Like I said, I went behind the goal and kept walking. Leo dribbles past 2, rounds the goalkeeper, scores. Jorge Messi बोलते हुए. Great play, goal. It was the only goal of a game that Leo's team ended up losing 2-1. तो 2-1 से लियो की टीम हार गई थी, पर मेसी ने वो एक गोल मारा, एंड मेसी ने वो एक गोल मारा जब चार्ली रेक्सैक देख रहे थे ट्रेनिंग. Rexak gets to the substitutes bench, not the first but the second, where all the coaches have gathered. Charlie Rexak बोलते हुए, it took me 7 or 8 minutes to complete the lap. I went to sit down on the bench, and 10 minutes after he had arrived, Charlie Rexak left pitch number 3. 10 मिनट तक उन्होंने देखा मेसी को, 10 मिनट में समझ में आ गया. He had sat down for a couple of minutes on the youth coach's bench, turned around, and gone out again the way he had come in. All that waiting, and he hardly saw a thing. All that waiting for Charlie Rexak to see Messi in action on the training grounds, and 10 मिनट ही खाली देखा. 10 मिनट ही खाली पूरा बिल्डअप पूरा दिया कि भाई चार्ली रेक्सैक ने अभी तक एक भी बार ट्रेनिंग देखी, बट 10 मिनट अभी खाली देखा. पूरा एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट ने, बार्सिलोना क्या प्रेसिडेंट के एडवाइजर ने 10 मिनट ही देखा लियोनेल मेसी को ट्रेन करते हुए. Jorge Messi thought Rexak had not given Leo the attention he deserved after the journey, the days of waiting. Absolutely. कोई भी डैड को ऐसे लगेगा. Had Charlie noticed the couple of things that Messi did? Jorge was asking himself. Surely that was enough to keep him at the club. Hopefully. At the end of the game, Leo said nothing. Always quiet,
he just listened. So that was it, guys. That was it. That was the first chapter. That was the introduction. ठीक है, वेयर्स लियो, ठीक है, एंड इसके बाद हम हमको पता चलेगा कि फिर हाउ डिड ही फाइनली गेट साइंड इनटू बार्सिलोना, ठीक है. सो वील मूव इनटू थोड़ा सा वील मूव इनटू रोजारियो, दो वील मूव इनटू हिज अर्ली चाइल्डहुड इन रोजारियो, so we'll move into that on the next stream. So that was the intro, guys. Thank you for all of you for joining in. It was almost exactly 2 hours. It is almost exactly 2 hours तक हमने ये stream खींचा, ठीक है. But thank you all for joining, ठीक है. अगर आपको कुछ questions है या कुछ comments आप दे सकते हैं, ठीक है. And then we can wrap up the stream. Go to stream, Guruji. Thanks, yeah. Thanks, Jabir. Ganesh Charlie saw Messi playing at the end. Absolutely, he did. We'll have to wait and see. Obviously, we know what happened, but we'll have to wait and see how that happened. How now Charlie has finally, been impressed by Lionel Messi and how he showed that he was impressed. So, वो सब भी देखेंगे as we go forward in the book. 10 minutes was enough. Ganesh, nice. Satvik Godet, thanks, brothers. Enjoy. Wow. Chinmay Barki, great sub, Guruji. Thanks, bhai Chinmay. Satvik wanted to read some books on football so far, but couldn't cause of my drop here. So thank you so much again, Gulji, for the stream, and please continue this series. PS for solving physics only while this. Thanks, bro. Thank you. I hope मैंने आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं mind refreshment दिया हो when you're solving physics. So yeah, thank you. Mahi Chaudhary, good job. Thanks, brother. Abhi Gupta, wow. Junki थोड़ा और गुरुजी. मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में 2 घंटे हो गए, नेक्स्ट स्ट्रीम में कर लेंगे. Old School Priest, enjoyed it. Thanks, brother. Thank you. Piyush Ranjan, maza aa gaya. I didn't get this book anyway. It's 6K on Amazon. It is. I have had this book since quite a long time now. Okay, so yes, it's 6K on Amazon. I also checked it today and I was pretty fucking flabbergasted. Chap 2 कब? Chap 2 काफी जल्दी, I hope. काफी जल्दी. I will try to do it during this week. Try being the keyword. Try during this week. अगर नहीं हुआ, for sure next weekend. मतलब weekend streams तो बंद ही नहीं होंगी. For sure next weekend दो stream होंगी, Saturday Sunday को. तो definitely एक chapter cover कर लेंगे अगर करना है तो. Next book reading stream when, as I said, definitely over the weekend. Nice to hear, Guruji. Has great. Maxine, thanks. Akshat Gupta, maza aaya. Chapter Guruji, explain Chelsea offer for Messi. Explain Chelsea offer for Messi. Yaar, wo sab to, that's a different thing altogether. Let's not get into that. Okay, let's just enjoy the story of Messi right now. Okay, let's not get into that. वो उस पे नहीं आते हैं. ठीक है. एक number, Guruji. Any idea where can I get it for cheaper? अगर यार चीपर में ना एक बुक चोर करके एक ऐप है, ठीक है, उस पर सर्च कर सकता है कि डाउनलोड दैट ऐप एंड सर्च इफ यू कैन गेट मेसी बाय गुलम बलाग. बट गुलम बलाग इज एन ऑथर विच इजंट एग्जैक्टली जो आपको बुक स्टोर्स में भी शायद ना मिल पाए. ठीक है, तो जो इंडियन बुक स्टोर्स में जो शायद आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, वो आपको चीपर में मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. पर either I'll see if I can come across a PDF of this, and अगर मिल जाएगा तो मैं definitely either link दे दूंगा, ठीक है, या कुछ ट्राई करूंगा कैसे भी करके शेयर करने को, तो वो कर सकते हैं. By the way, where is Anurag? He was asking for the stream. भाई सही में यार, अनुराग भाई तो he was asking for the stream constantly. बोले थे कि सुपर चैट भी करेंगे. ठीक है, सुपर चैट भी कुछ मतलब ध्रुमन भाई तो मस्त है. ध्रुमन भाई ने सुपर चैट की, पर अनुराग भाई कहाँ गए? अनुराग भाई ने तो की नहीं. अनुराग भाई करने वाले थे सुपर चैट. क्रेजी. ठीक है, प्राइवेट मत करना भैया. प्राइवेट नहीं करेंगे फॉर श्योर. कल ही कर लो. कल नहीं हो पाएगा अक्षत यार. कल एज आई सेड माय ऑफिस शेड्यूल इज प्रीटी क्रेजी. बहुत क्रेजी शेड्यूल है, तो इसलिए मुझे सैटरडे संडे को थोड़ा टाइम मिलता है आपके साथ, तो सैटरडे संडे करता हूँ. Promise us, Guruji, you won't read it without us. नहीं करूँगा यार. I've read it once already. ठीक है, I've read it once already. I'm rereading it right now. ठीक है, and I'm only rereading it with you guys. ठीक है, तो वो चीज़ है. अब हर संडे वेट करना पड़ेगा वेब सीरीज के न्यू एपिसोड की तरह. यही है मार्केट एम्प्लॉय पीयूष रंजन. प्लीज डोंट प्राइवेट दिस, गुरुजी. आई जस्ट जॉइन. नहीं प्राइवेट करूंगा. प्लीज देख लेना, आराम से देख लेना. अंकारा गुरुजी, कम्युनिटी पोस्ट कर देना गुरुजी नेक्स्ट टाइम बिफोर दिस बुक रीडिंग स्ट्रीम. पक्का.
पीडीएफ हाँ मैं ट्राई करूंगा, पीडीएफ अगर मिल जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो इधर ही है ना, मैं तो आपके लिए पढ़ ही लूंगा। Waiting for chapter 2 web series Ultra Pro Black. Like and subscribe, guys. If you haven't, please do it. Please do it. Helps me a lot. गुरुजी एक साइड हफ्ते भर हाउस ऑफ ड्रैगन्स का एक एक एपिसोड का वेट करते हैं, अब इसके चैप्टर्स का भी क्रेजी, बट आई हैव टू स्टार्ट हाउस ऑफ ड्रैगन्स गाइस। आई आफ्टर दिस स्ट्रीम आई विल स्टार्ट हाउस ऑफ ड्रैगन्स, तो वो चीज तो आई हैव टू स्टार्ट, एंड वी विल देन डिस्कस अबाउट गेम ऑफ थ्रोन्स एज वेल भाई। वी कैन, आप बताओ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डिस्कस अबाउट भाई, टू बी ऑनेस्ट, लाइक अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल राइट नाउ, ठीक है, ऑल्सो फुटबॉल तो वो भी डिस्कस करेंगे, but a lot of other things, like anything, any TV related shows you like, or WWE, anything of that zone, amazing, we can discuss about anything of that sort. But yeah, let's do that for the next time. Book reading is something that we will continue, बहुत ये book तो खत्म करनी है, ठीक है, तो और ये book खत्म हम नेक्स्ट रीडिंग हम सैटरडे को डेफिनेटली ट्राई करेंगे रखने को, ठीक है। अचानक से नहीं नहीं नहीं, सैटरडे को पक्का पक्का पक्का। मेरे तुम्हारा बर्थडे है 28 को, 28 कब है यार? 28 यार, वेडनेसडे, वेडनेसडे हो पाएगा यार, वेडनेसडे नहीं हो पाएगा भाई, सो सॉरी, वेडनेसडे नहीं हो पाएगा, बट प्लीज प्लीज वीकेंड, ठीक है। ऑलराइट, चलो बॉयज, टाटा, सी यू until the next weekend. Have a great Sunday, मजा करना, चिल करना, एंड जिन जिन जो लोग अभी अभी आए हैं, प्लीज डोंट वरी, यू कैन कैच दिस होल स्ट्रीम। एक चैप्टर रीड किया ऑफ मेसी गुलेम बलाग का, कैच दिस होल स्ट्रीम, पीछे जाओगे मस्त, यू कैन कैच दिस होल स्ट्रीम, आराम से पढ़ना, आराम से सुनना, एंड इफ यू वांट टू बाय द बुक फॉर ऑल द पीपल जो बहुत रईस ज़्यादा हैं, ठीक है, यू कैन बाय द बुक फ्रॉम द Amazon link that I've given in the description. So cheers guys, have a great one, and meet you soon next weekend. Peace.